Financial, Choice, New India Assurance, Bank of Baroda, Indian Oil Corporation Limited, Holani Consultants, DCM SHREYAN. We thank you all. Dear friends, I, CA Abhishek Pandya, along with my co-host, Advocate Ruchika Sugani, welcome you all to the 6th technical session of this national conference, SHREYAN. Well, my dear friends, as we all know, it has been 6 years since goods and services tax came into force. The statement, one nation and one tax system, has not only unified most of the indirect tax laws in India, but has surely made the lives of various stakeholders easy. What do you say, Abhishek? Well, Ruchika, the journey of GST has not been smooth. But what I am concerned is not about the past, but future of GST. Abhishek, and to fulfill your wish, we have a very next technical session called the Future of GST. And to begin with the session, I'd invite on stage the moderator for the session, Advocate CA Rahul Lakhwani, sir. Mr. Rahul Lakhwani is a senior partner at Chir Amrit Legal LLP. He heads the tax division of the firm and is a renowned figure in matters related to indirect taxes. We welcome you, sir. Moving ahead, I would like to call upon the panel is CA Chirag Jain. Mr. Jain is a lawyer and currently heading the indirect tax vertical of Ashok Harkawat and Company, a Jaipur-based multidisciplinary CA firm. We welcome you, sir. Now, I call upon the dais CA Rajendra Kumar P. Sir. He is the chairman, GST and IDT Committee of ICAI. We are pleased to have you with us, sir. May I now request Shri Alok Gupta sir to please join us on the stage. Sir is the Additional Director General of GST Intelligence, Jaipur. We are honored to have you with us, sir. Next, I invite Advocate CA Jatin Harjai, sir. Mr. Jatin Harjai is a practicing advocate and holds expertise in indirect taxes and has various landmark judgments to his credit. We welcome you, sir. May I now call upon the dais is Advocate N. Venkatraman, sir. Venkatraman, sir, is the Additional Solicitor General of India. He has completed 33 years in professional practice and has litigated on matters of substantial public importance such as Sabrimala, Article 370, Citizenship Amendment Act, child sex abuse, and many more. Sir, we are truly privileged to have you with us today. Moving on, may I now invite CA Anil Bafna, sir, to kindly come up on the stage and present a bouquet, and CA Ashish Sharma, sir, to kindly come up and present a memento to CA N. Venkataraman, sir. Sorry, Advocate N. Venkataraman, sir. Now I request CA Aditi Sharma and CA Anurag Dangayaj to present bouquet and memento to Alok Gupta, sir. May I now request CA Naveen Gupta to present a bouquet and CA Sahdev Saini to present a memento to CA Rajendra Kumar P. Sir. Next, I would request CA Pavan Kumawat and CA Jitendra Yadav to present bouquet and memento to Advocate CA Jatin Harjai, sir. Next, I request CA Prakhar Khandelwal to present a bouquet and CA Amit Kedia to present a memento to CA Chirag Jain, sir. Lastly, I request CA Kartikeya K. Kashyap and CA Pavan Singh Shekhawat to present bouquet and memento to Advocate CA Rahul Lakhwani, sir.
sir. We are extremely honored to have you all amongst us today. We now hand over the mic to session moderator, Advocate Rahul Lakhwani, sir. Thank you so much, Abhishek. Thank you. A very good afternoon to all of you. Am I audible till last? Till last? The last ones? Great. So, I know it's really difficult after having such a wonderful lunch in a winter time and listen to the GST topic. But I would first of all like to start with by a big round of applause for the panelists, because I tell you, they started 6 a.m. in the morning, or better to say, catched the flight of 6 a.m. in the morning, so they must have started 4 a.m. in the morning after having a very, very tiring day yesterday, because he has argued a matter at CCI, I guess, correct? Competition Commission of India. So big round of applause in the starting, please. The hospitality of the Jaipur need to be seen. Thank you so much, sir, and to all the distinguished panelists who are the part of the panel today. So we are going to have a panel discussion, sir, just to appraise you on different topics, what we have made. We have one of the versatile panel today, as we have at the center the revenue, the person who represent revenue at Supreme Court, and the revenue themselves is there with you. They are sitting in the middle. Then we have Advocate Jatin Harjai ji. He represents assessees, and Chirag, who is from the side of assessee, briefing Jatin Bhaiya for a matter. And then we have Sir to conclude on certain points from the institute side, because Sir, I hope so, we are going to get some good insights on that. Not institute. Sir is saying that I want to refrain myself from the institute side. I want to give an independent view. Correct, sir? Then I have to take the permission of my committee. So I will not speak the institute's language here. Thank you. That's great, sir, because once institute comes, some limitations come when you are excluding that part. So a true professional view will come up. Thank you so much, sir. So as you all know, the topic of today's discussion is future of GST. So to start with, I would request the backstage team to kindly play a video. Can I have that on the screen, please? The backstage team. Can I have the video? The most terrible thing that will happen to this country. It is, somebody said that you can't stop an idea whose time has come. In my personal view, GST is a horrible idea whose time should not come, but unfortunately it will come. And I don't say this to shock people or to dramatize something, but I say it out of strong personal conviction. I still cannot fathom how anybody can conceive and implement this concept of GST that is going to come 120 days from now. Why do I... That's it. Thank you, backstage team. So that's a statement given by Honorable Senior Advocate Arun P. Datta Sahab, just 120 days prior to implementation of GST. Now we are sitting here with 5 years, 9 months of GST approx completed, and we are discussing the future of GST. So to start with, to Venkatraman sir, the journey of 5 years, 9 months, whether you will say the statement of Datta Sahab was correct or not. That is what I want to respond with. Namaste to all of you. Happy to be here after 31st December 2019. I'm back in the same hall to meet you all. Thank you so much. Rahul, I have to say that it's unfortunately the assumption of Mr. Dattar is wrong. And not wrong by 5% or 10%, it is wrong 100%. I'll tell you the reason. In short, see, it is GST which has brought this nation together in spite of political and governing indifferences amongst parties. Because this is
is one legislation which has been voted in the parliament in all the states and union territories without a single dissent. It's an unanimous decision by the union and the states. One. Two, transparency and technology is the basic two limbs or pillars of this law. Today, even today, we have the menace of fake invoices. I don't deny it. But this was much more earlier. We have now identified it because of technology. And see the quantum in 2017, see the quantum in 2022, it's reducing. There is now a compulsion that unless you are in the league of technology and hook up to the GST network, you are not going to survive as a businessman. So technology has brought from 60 lakh assessees in 2017, we are today 1.41 crores assessees, doubled in 5 years. 3, it's a record that the last 10 months we are showing a tax collection of 1.5 lakh crores and above every month. Show me a parallel legislation in 70 years. 4, in spite of COVID, GST collections buoyancy did not, except for the first 4 to 6 months which was fluctuating. You go and check back figures. All this is available in public website, in the government website. So, when tax collection has happened, and tell me, so the only ground they say is so many arrests. Yeah. You pit against 10 good points and 1 bad point. How many cases arrest is justified? Courts are testing it. There's no final conclusion on that. So, it is certainly interfering with human liberty. I don't deny it. So, we have to be extremely cautious. And there are set of judges who view, if you had collected the taxes, why do you want the man? That's one view. The opposite view is, but for catching hold of his collar, he would not submit to the rules of law. It's a second view. So this has to be chiseled out. It will take some time, but this is a weathering course. It will achieve some finality in the next few years. So take that out of it. But for that, please say what's wrong with this law. And one taxation, one nation. Our neighbor country had always an advantage against us to say, look here, don't go to India as a destination base. Because the last mile taxation, you'll have 25 different rates. Today, you have one single rate in income tax, which is a union law, and one single tax of GST, both union and states together, and the concept of pooled sovereignty. See, whether our constitution says whether we are center-centric, there are some articles in the constitution which says it is center-centric. There are some articles in the constitution which says it is state-centric. GST is the first time new avatar where we have encouraged the doctrine of pooled sovereignty. It is not surrendering sovereignty. Neither the states have surrendered nor the union has surrendered. They have joined together as hands, and recommendations, 99 out of 100 recommendations get through in an unanimous way. How can you say it's a shocking legislation? I leave it to your mind. Great. Thank you so much, sir. Thank you. Now, the particular aspect which you have said to left is the arrest part. So, a fact I would like to highlight here in that, and that's I've taken from the website of Director General GST Intelligence. It says that in financial year 2021, they have detected fraud of around 54,000 crores, and from that 21,000 crores have been recovered, means that have been the place deposit. And they say that the arrest of 426 persons have been made. Unfortunately, 14 of them are professionals, some of the members of our institute. That's only an arrest. The trial and prosecution part will follow later. But that's what the fact and figures are, what DGGI is presenting. Now, sir, I need to understand, independent India, with a good 70, 75 years of business fraternity working, what, is this something fraud are happening just now? Because I am putting this question to Alok, sir, that is this something the fraud are happening now? Or there's something better about GST by which the fraud are coming out? Or
it's a kind of little misuse of the powers of arrest with respect to traders, which was available under the VAT laws but not implemented because the state authorities normally won't listen that they are carrying out arrest exercises. But now in last 5.5 years, and 1 year data says 426% arrested. So where that all fraud was, or because of GST the fraud has started. That's what I would request sir to clarify upon. Yeah, I would surely. Please sir. Am I audible? Yeah. So the first point is why so many arrests, I think so. Whether the frauds were taking place in prior regime also, but I think these frauds were taking place then also, and almost same quantum. And the people who were doing the frauds in VAT or central excise, they have continued that in GST era also. The difference now is that I think more because central agencies are now involved. So we have a better coordination with our other authorities in various states, which was not there prior VAT regime. And now the tools are better. We have systems in place like Advaita, BIFA, which give us very good insight in what is happening, which was not there prior to it. So that is why the people are getting caught more. Now, the personal liberty aspect, arrest. I think the number of arrests, 426, I don't think is very high. Looking at the amount of evasion that is taking place. I agree that the personal liberty is involved and we should be more vigilant, and now board has also issued our instructions in which cases we should be arresting people. Now there are clear-cut instructions that if the person is likely to flee or is not cooperating, now this word cooperating is also a very subjective term, that who is not cooperating, or if he is liable, he can influence the investigations, then only we have to arrest. So after the issue of circular, I think there is a perceived decrease in the number of arrests, and I hope there was a need of giving telling the people that if you will do evasion of this sort, because the number of fake invoice cases was very high. So there was a need that people should understand that if there can be arrest. I think I can change my view after seeing your numbers. See, 54,000 crores and 21,000 crores has been recovered. I don't think you could have recovered that large an amount without some legitimate arrests. And monies would not have come into the coffers without arrest. Okay. So that's one benchmark, you should bear it in mind. And you can give me some credit for being instrumental in bringing this SOP. We sat in the board and we discussed it, because every third day we were fighting a case on bail. So we sat and wrote this SOP. Two things is very important as professionals. See, ultimately a call is taken to arrest somebody. If the call is without prejudice and to protect revenue, those cases of arrest gets sustained. If the call is applying prejudice and you arrest somebody, those cases fall flat. These are the two buckets in which you have to plan your arrests. Coming to professionals, it is true, it is very sad, but one thing, rule of law doesn't spare anybody. Its rule of law doesn't look whether you are a professional or a non-professional when the conduct is found to be very similar to be promoting, especially in fake invoices. So that is something as professionals you should take the cue. Stay away, it's always, in fact I saw Mr. Goyal repeating it in his session, we should repeat it once again, it's worth it. Stay on the right side of law. Stay away. Your clients can do what they like, is their choice. We don't have a control over them. But as professionals, never stray into an area, a gray area, for some unintended resourceful benefits.
as professionals, it's not worth risking it. It's an advice. I thought I should share it with all the professionals. So this cannot go on. And fake invoices happens in identified industries. Tobacco is a very leading case, especially to exports, rebates. These are like that. There are 6-7 identified industries, and we are now working on it, and we are now downsizing it from what it was. See, what happened was, you should answer is this: it was much more, but we didn't have the technology to capture. Got it. Now it is exposing them because technology finds them. You are now under a camera which focuses you, which traces you. Okay, that's all the difference. But that's a thorn in the whole system. I don't deny it. But you can't be striking at the thorn and in the process kill the bush when it is actually yielding, and 90%, 95% of the people are following the law. And therefore, this law should be allowed to succeed. It brings harmony between union and states, and it's our wish that this constitutional body like GST Council should multiply into more and more such constitutional bodies on environment, on water, on forests, similar areas where we can come together, pool our sovereignty, and do something much, much better to our citizens. This should be our ambition. Great, sir, great. I would request Rajen sir now to take up, because we have heard a lot from the revenue perspective, the importance. But let me tell you certain problematic area. Even though sir has said just be away from all those files where there is some scrupulous activity. But I tell you practically, sir, on ground what happens. There's a fresher chartered accountant or a chartered accountant with 4 to 5 years of experience. He says that there's a person coming up to me saying that you please file my returns, and many times during the registration, mistakenly they put up their mobile numbers and email IDs. And at the end, when department start traces, they find out that the number is of a chartered accountant. And say 5 to 7 registrations have been done from his offices, and he's handling the books of accounts and others. Now, the department straightforward called them for summon, and summon to a chartered accountant with 4 to 5 year experiences. And some of the cases where even though bail has been granted, few of them even I have litigated in 2017-18 where eventually the bail has been granted. The point is, I just wanted Rajan sir to highlight upon what curtain to keep, or what precaution a chartered accountant needs to take, or what guideline you will give to all of them that in all these matters, what ethical conduct they should follow. I would like to answer on that, sir. Thank you, Rahul. Very esteemed senior Venkatraman sir, we have Alok Gupta ji, other esteemed panel, we have Principal Chief Commissioner CGST seated here, and other esteemed members. I qualified as a chartered accountant in 1995. And my senior, see, the most important thing in our profession is your articleship. Who is your senior? Your principal under whom you did your articleship. My senior told me one very important point. He said, now that you are going to practice, no client should walk into your office without calling you. He must first call you, find out whether you are there in the office. You must take your time and then come. Do you walk into a advocate's office without checking whether he is there or not? Do you go to a hospital to a doctor without checking the concerned doctor is available or not? You do wait for him even if he's not there. So the first thing that you must do is the client, to respect you, he must ask for your time. That's the first important point. But then chartered accountancy is a mass profession these days. There are two things. One is a class profession, the other is a mass profession. Somewhere down the line, we have converted the class profession into a mass profession. Someone can just walk into your office and say, please file this, and our people do that. That is to be avoided. And your phone numbers, your personal identity, your email IDs are yours. You're not supposed to share it with anyone. And the day you do it, then you're compromising your security, which you're not supposed to as a professional. Never do that. That is my sincere, for whatever cost, because for whatever price
the client pays you or whoever pays you, remember, compromising your security, compromising your personal security, the price which you will pay will be much, much more than what you received from your client. That's my request and advice to many of these, I won't call junior chartered accountants, call chartered accountants who have just started practice. Thank you. Thank you so much for this piece of advice, because I tell you many times when I give lectures and conferences, they say that, sir, the need was requiring so, but you have given that if you have strong principles, then definitely you will be making a wise decision by not compromising the personal security just for the sake of earning a little amount of money. Thank you so much, sir. I would like Jatin sir to take up the mic. Jatin bhai, please have the mic. So we heard the word fake invoice. Now let me share a very practical situation with you. Here I'm talking about the metal scrap sector. There are many similar sort of sectors, but just let me share a very simple one. They say that we buy metal scrap with goods, with invoice, with e-way bill, with documentation, with proper vehicle. And that comes in our premises. I have all the records. And what I do melting of it and galvanizing and everything, then process that. Now the problem is, I have bought from a broker who is in the market, and they have say 10 vendors from which they supply to me. I've never met a vendor. Why should I meet? No, law doesn't require me to meet to the vendor. Law says that if you are buying with a bill, with a check payment, with a proper e-way bill, with goods coming in your factory in a vehicle which is registered and everything, and records are being maintained, what is the problem? I don't want to meet the buyer. The department comes and says that down the line 2 layers, for say there's a person who is supplied to me and there's another person who is supplied to them. They are non-existent. And because you have taken credit of amount more than 5 crore, come with me, I am arresting you. Now these kind of arrest I have also seen and litigated, even though bail has been granted and the matter are pending in adjudication. Now what on that? What would be your call for those assessees, or what piece of advice to those assessees would you be giving, please? This one is fine, I think. First of all, thank you for the organizing committee to having me here. Rahul, with your consent, I'm going to take 2-3 minutes apart from before answering this question. First, let me tell you whole of the house that we all were facing huge issues in transitional credit. And Mr. N. Venkatraman was the person who actually resolved it. So he actually deserves a big round of applause for it. जो हमने second round of transitional credit देखा, it was a brainchild of Mr. Venkatraman. Now let me come to one aspect. Rahul asked a question to Alok ji. He was very conscious to use a prefix, little abuse. I must say, in my humble opinion, I'm just giving a rejoinder without even asking by you. It is not even little abuse. On a ground reality is there is good amount of reasonably good abuse of powers are there by the authorities at the ground level. I'll just give one example. We all know that law is crystal clear. There is no room for any second view. That recovery proceeding cannot happen until unless adjudications are there. Except certain provisions are there as far as 83 is concerned, everyone is aware about it. But what happens on ground reality, whosoever has attended search proceedings in this house, each and every person will agree with me that the sole objective and aim of the officer who's searching the premises, who are searching the taxpayer, is to get the amount deposited, that's it. This is what the sole objective. I'm sure each and every one of you will agree with me. So why I raise this particular point, because we are having a esteemed panel here, and I have a maybe I can request Venkatraman Saab, Alok Saab, ki maybe at the department level, Alok Saab, and maybe at the policy level, if the Venkatraman Saab can advise something, though we are having a instruction even from the board as well,
But some kind of logic may be dragged out that these type of abuse of power should stop. One, coming to now your aspect. See, we are well aware that ये जो input credit का, bogus billing का, fake firms का जो सारा issues रहा, इससे revenue को damage किया. That is why we seen a couple of amendments in the law as well. But ultimately, what is key aspect? Law cannot expect from a person which is impossible. We all know this aspect. Lex cogit non ad impossibilia, which is a Latin phrase, we commonly use it. So what in the given situation which you told me, I will say if you are, that means the person who bought that scrap is not involved in that scam. In that case, he should get that credit and he is not covered. The moment he is involved some way, he is taking some kickbacks, then case gone. I will go by that analogy. Ki reality kya hai? I'll just remind, there is a lovely judgment of the Honorable High Court in the 2022 itself, of the Rajasthan High Court. Asha Oil Traders. It was a STR actually. If we'll go what questions were formulated in that petition, and what answer our Honorable High Court has given. Please go to question number 2 of that. Question number 2 clearly says, whether buyer can be held responsible for non-payment of tax, for anything wrong in the invoices, even they clearly use the word in the question as fake invoice. Please check that. And answer of our Honorable High Court was, no, buyer cannot be held responsible. So I'll go by that analogy. If I'm doing something, everything correct, there is a fault on the part of the supplier. Until unless buyer is, उसके साथ मिला हुआ नहीं है, kickback नहीं ले रहा है, buyer का credit deny नहीं होना चाहिए. Government should recover this aspect from the seller only. So just to add to this, that definitely this will be examined once the prosecution thing will be launched and the trial and everything will go on, or the adjudication exercise will happen. But the challenge what comes up, Jatinji, is that at that instance, the pressure requires that person either to pay something or either go behind the bars. That's reality what you are talking about, what I understand. So coming back to sir, yeah, I would request yes sir. So coming back to you, the point is, now here we are looking for that can't there be any accountability on the officers itself for that, and also looking some sort of anticipatory bail kind of options, if you can come from your side. See, please. I think the rules we should draw. I'm happy you are focused on this. It gives us an opportunity to also express our view in a public forum. The rules are, I mean, take the stray instances. I'll deal it in a minute's time. What is the rule of fake invoices? In my appearances in the court, this is how it happens. It happens as fake invoices in GST. It happens as fake IEC codes when it comes to customs. Both are one and the same. None of them stay beyond 45 to 60 days. Please, these are all points you should bear it in mind when you deal it, because we are talking to professionals. We are not talking to the trade. We can be quite ruthless and point blank. None of these cycles exist beyond 40 days. 2, who are these fellows? Some cycle wala fellow, people whose bank accounts will not be worth even 300 rupees in their books. He will have a bank account, he will have PAN account. You go and check up the bank account, it will not be even 300 rupees in his bank. So he will be holding a PAN, he will be holding a GST and registration, and he will be peddling invoices. 2. 3, the question I ask to you as professionals, when these types of people are genuine, iron and you are all talking about iron and steel is again a very, like tobacco, it's an evasion prone industry. See, it's an engineering marvel to me. For 30 years I've been an assessee counsel, 3 years I'm a revenue counsel, but this marvel has baffled me. Cement industry is an industry which accounts all its transaction. Iron and steel industry is an industry which does not account. So, if you go by the iron and steel consumption, every building in this country, including this building, will be an engineering marvel
built without steel or with less steel. This is how the disproportionate evasion happens in this industry. Now you are saying, I am a genuine melter, I am a genuine production of iron and steel products, so you don't want to buy from Visakhapatnam steel plant or steel plant. All right, that's your choice. If you are a genuine manufacturer, how do you say you are not able to find out a genuine supplier from an ingenuine supplier when you have an industry for 20 years? These fellows are all 30 days operators, 40 days operators, 60 days operators. You answer that question. I'm saying this out of statistics. No fake fellow stays beyond 60 days in a system. He'll be caught. We have a case, 928 crores evasion involving 672 fake fellows whose destination period is 18 days to 38 days. I'm speaking out of strength on statistics. Now you're all saying we are all very genuine producers. If you are a genuine producer, you should know a genuine seller. The onus is on you. Don't tell us that we should come and collect it from the supplier. We can't collect. The fellow will not be there. He'll be a panwala or a cycle rickshaw puller. He'll be a fly-by-night operator. So when we pick up, see whom are we picking up finally? 8 out of 10 fellows will be only these fellows. So why are we picking up? There are two bases for picking them up. If you pick them up, if he is one, some people are, see, you can't also find such peddlers in large number. So they will peddle for 40 days in one name in one pan, then peddle for another person in another name in another pan. So they'll have 10 bank accounts. So if you catch such a guy and pick him up, there is a possibility to find the real man. See, when an arrest is made by an officer, he should also think on these lines. He can't just pick somebody. So he picks the right guy, he will find the man behind him. We have done it in Bombay Customs. 7 people came out from the dark because we seized something which is very, very precious. So we found out this fellow is having a bank account for 1,000 rupees and the export is worth 4.5 crores. When you detain, at some point of time somebody has to come out. He will come out. So as professionals, stay away, don't be emotional, don't treat it as though there is liberty. If somebody's liberty is interfered, we should stand up for there and fight with our voice. It's our professional duty. But to paint everything as liberty and then allow this scandal to happen, then we are not going to course correct this process. Genuine melters, genuine producers should know genuine suppliers. It's your onus. That's my... Fine, thank you so much, sir. So just cutting on this topic because we have a lot on this fake invoicing thing and arrest part. I just move on to the next topic which I want to discuss. So Rajan sir, that's for you. So 9C is a certification at a... It's a genuine statement. I will request professionals to understand the perception and don't mean anything personally. Please stay away. I'm telling you, it's very important. You can shine so well with your professional alertness and abilities. Never get into a wrong businessman for wrongful gains. And when I say, I don't mean anybody in person, because he flagged off that professionals are getting picked up. Please stay away. It's not worth it. Great, sir. So coming back to the topic which I was discussing with Rajan sir. So 9C requires certification prior to 2021. The government announced that from 2021, 9C certification is not required. There's not even a single amendment in the form. Now, many of my professional friends say that the assessees are coming up saying that there's no more audit required. They are saying that the fees need to be reduced because audit is not required. That's only a form which has to be filled. And at the end of the day, their question is, while filing the form 9C, whether my onus is reduced, onus to the extent that I don't certify, but I have to complete the form. I have to do everything which was required to be done earlier, only the certification is not required. So they are facing challenge because government is announcing that there's no more audit, form is still there, they have to take care of the same. One, and the second aspect of that, may I know the institute stand on it for the reason, if something is certified by a chartered accountant, obviously he's going to look into more detailed manner because he has finally to take the onus upon him while certifying it. And during that exercise, I'm pretty sure that many such problems will be identified
which eventually the department will identify at the time of audit. Now, is the government not trusting on the certification of an auditor? Is that the scene? And what steps or what representation is institute giving on that? That's I want from your side, please. Very good question. I was expecting this question on the lines of 9C, etc. 17-18. What was the revenue that was generated out of Form 9 and what was the revenue generated out of Form 9C? Is anyone aware of that? Anyone in the audience? GSTR 9, how much revenue? 10,000 crores. 10,000 crores, Gupta ji. GSTR 9C, 350 crores. Why do you need 9C? Why was first 9C brought into place? Why was the certification given to chartered accountants? So that you tell the government, look, I have found this. Look, this is what is an error. Look, this is what is the mistake. We are speaking in the house. ये बात घर में हो रही है और घर में अगर सच्ची बात ना हो तो उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं हो सकता दुनिया में. तो जब गवर्नमेंट ने अपने को ये काम दिया 9C का कि तुम सर्टिफाई करो, सॉरी वेंकटरामन सर, आई एम स्पीकिंग इन a language which is conversant here. In Tamil Nadu I can speak in Chech Tamil, you know that. जब गवर्नमेंट ने हमको ये काम दिया कि तुम 9C सर्टिफाई करो, मुझे बताओ कितने ऐसे सर्टिफिकेट थे जिसमें कुछ व्यूज दिए गए, कितने ऐसे सर्टिफिकेट थे जो क्वालिफाई हुए, कितने ऐसे सर्टिफिकेट थे जिसमें कुछ एरर की बात की गई. I can tell you, if there can never be a 9C certified by a chartered accountant without any mention of any error or mistake. Very simple. There is one particular line they ask, whether the registered person has complied with all the provisions of Act and regulations. Sir, there is reverse charge, isn't it? In reverse charge, you have what is known as self-invoice. Many of the registered persons would never have raised it. You can just simply written one line. In this case, I noticed just no self-invoice has been raised by the person concerned, that's it. But sir, let me tell you, you asked institute stand, you referred to me as the chairman also. We took up this matter in the year 2020 March. I can tell you, moderator sir, 90% of the 9C were, that's it. Nil, wait a minute, please hold on to your views, please hold on. Now second, I am a member of the disciplinary committee of ICAI. Sir, I would have dictated not less than 400 judgments till date, dictated. And I've heard cases not less than 600 cases in the last 5 years. And let me tell you, my dear friend, I'm happy 9C certification is not with my profession. Why? I would have been made to sit on so many difficult cases because of the fact of all these nil forms which have been signed, and tomorrow department goes and finds 10 errors, 10 mistakes by which the registered person pays a huge amount. Where does your certification stand? Where does your certification protect you before the society at large, before the regulators, and of course before the disciplinary committee of ICAI, which is much more dangerous, you know. So what I would say here is that, yes, 9C is something which is at bay now. It will serve, because audit is a serious business. That's what my president told this morning also. Audit is a serious business. If you can't be serious, don't come near audit. If you cannot be serious in a certification, it is not mere certification, it is an audit that you are doing. So my dear friend, I would only say that you must be very, 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 very true to what the government has reposed the confidence in you. You are doing the scrutiny. It is akin to a scrutiny in the income tax law.
That is what is 9C. 9C is not 44AB. 9C is a scrutiny under the income tax law which you are doing. Thank you. So, sir, when you talk about 17, 18, 18, 19, 19, 20, the figure of 10,000 crore, what you are referring to 9, is because where 9C is being done by an auditor, the 9 is obviously has been taken care by him. So he has done due work and got that 10,000 crore in the pocket of the government. That's one. Second, I tell you, sir, why we are from the CF fraternity, we are looking into that this aspect need to be taken care of, because the seriousness in terms of assessee comes only if there's a certification. Else, there are many accountants which may say that, okay, certification is not required, nothing will be summed. So the point which we wanted to put up is that if there is a detailed scrutiny, the term scrutiny need to be replaced with an audit, compliance to the law. Then obviously, at the time when the department will look into the books of accounts of the assessee, it would be a lesser, I should say, the non-compliance which will be addressed. So why they don't want to take in help? Assessee is a person who is going to do a self-filing kind of thing, but there need to be a profession. In income tax, we have that from very past. So why not still to be continued? Just perspective, I would like to put up from the side of all. See, the departmental audit once in 5 years at least, or twice or thrice, based on the turnover of the registered person. I don't call assessee. In GST, there is no word called assessee. It is registered person. That is very important. Now, registered person, either every year audit by the department, or maybe once in 2 years, once in 3 years, whatever it may be. Now, when that happens, your client looks to whom? Your client looks to the chartered accountant. Here, the department comes to your doorstep, and when any government authority comes to your doorstep, certainly your client's mind ignites why he has come, etc. Now, you're talking to me sitting there that we are doing the entire work, but no one is willing to pay the fee. Now, I can't compel the client to pay the fee. It all depends upon who you are. I can see here P.P. Parikh sir sitting here, a former Central Council member, a very reputed person. Can anyone meet him just like that and just walk away without paying his consultancy charges? Absolutely not. That is a stature which he has built for himself. That is a stature which he has built for himself. Prakash Sharma has just entered. I don't think anyone can meet him without paying his genuine consultancy fee. That is a stature which he has built up. So in a profession, it is a stature that matters. Ye chehra. There is a movie which came up ki ye wo us chehre ko pehchante hain. I think it is that Rakesh Roshan's son's movie, isn't it? So this face is very important. The face is very important. Okay? Now, when you do that, basically somewhere then the difference happens. When the department comes, when the registered person is visited by the department, he takes the assistance of his chartered accountant. That is where your expertise comes out. That is where your expertise comes out. So I understand. And if you have done everything in 9C and the department doesn't find anything, believe me, I can tell you, they will say, well done, good job. They come and ask first question, आपके consultant कौन है? आपके CA कौन है? वो नाम से ही बस है सर. अच्छा जतिन हरजाई जी है क्या? चलो सब कुछ सही रहेगा. So what राजेंद्र कुमार है क्या? खत्म. What I'm understanding, sir, instead of this certification kind of thing, you can build a lot of career in the litigation, because finally there will be some non-compliance, the department will come do an audit, there will be a notice, and then do the litigation practice. That appears to be one of the instances which you want to highlight. Thank you so much on this, litigation sir. is also a practice, sir. Yes, But yes. chartered accountants are compliance professionals. Compliance professionals. So the main basis of creation of this profession is compliance. And then what happens is litigation. If you don't comply, then of course we have so many other people. Great, sir. Thank you so much. Now, let me take up on certain technical topics which we want the esteemed panel to answer upon. So, Chirag, can I have a mic from your side, please? Very, very, very simple issue, but why I wanted to take up, because there is no clarity. Under income tax law, still there is a clarity on it, but the same is not there in the GST law. So, yesterday we had a session in ESG, somewhat it comes on or oblique CSR when we talk about. Both of these terms
appears to be somewhat an activity which is done on account of a requirement to a little extent, not compulsive under the law, but at the very same time out of own wish, out of own choices. So there is a lot of doubts among professionals that what will happen to the expenses which we have incurred in terms of carrying out the activity of CSR. So a little clarity I would like you to give upon that now with some examples, please. First of all, it's a matter of great privilege to be sitting here with such an expert and esteemed panelist. So CSR is a basically a contribution which is mandated under a particular law, Companies Act. So it's mandatory for some companies and obligatory for some companies. So for all those companies which are mandatorily required to comply with this requirement, they cannot sustain, they cannot continue their business without contributing into CSR. So when they cannot continue their business without contributing into CSR, how can they continue their business? So in GST, input tax credit basically, the preliminary entitlement for input tax credit is, it should be used in the course of furtherance of business. ITC also, sir. Supply should be in the course of furtherance of business, but ITC also should be in the course of furtherance of business. I assume this question is on input tax credit, right? So what is business is also defined in the GST law. So everything done to undertake business activity, it's a very elaborative definition of business under the GST law. The problem arises is because under the income tax law, section 37 which allows deduction of business expenditures, it says any expenditure made towards CSR contribution will not be allowed as deduction. So if something is not allowed as business expenditure under income tax law, can that expenditure also be said to be non-business expenditure under GST law? This is the basic question. So if any particular treatment is done under income tax law, the same treatment need not be done under the GST law. And we have we already have a ruling from Mumbai Seastat in case of SL Propec, where they say, where the court says that CSR contribution is done only and only for in the course of furtherance of business. So if it is in the course and furtherance of business, there is no denial for ITC. So the view is of yours is on a positive side. ITC is allowed, positive side. Okay. Anything from the revenue against? Arguable. Arguable. Great, sir. Reason is this. I mean, I'm very happy the approach Chirag is taking, very professional approach. But it is not very, it may not be look very neutral. For example, a statutory payment which you are to make, a tax certainly is a payment in furtherance of a business. I just want Chirag to clarify this. Now, if I want to go to the statement of objects of, I'm making a tentative statement because I need to read it. But the area which Chirag has to clarify is, if the statement of objects of CSR says, because you do business, because you generate, there is a mandatory obligation for you to contribute. Or you do business, but as an entity, you are obligated to contribute. There is a difference between the two. It's very subtle, but still a distinction. If the obligation is because of entity, or the obligation is because of business, that will be very decisive for you to bring it within the phraseology, furtherance in the course of business. So this it's very, nuancing is happening today in the court. As professionals, we should be very, very, very clear about it. Next week, we are going to argue a huge battle of 200 cases. The whole of India, Ireland, the DTA is under contest. The distinction between operation lease and financial lease, which is a time-tested distinction for 35 years. We have so much of jurisprudence. But the underlying international agreements are so convoluted. It's like square and rhombus. Somebody will say both has only 4 sides. But in mathematics, square and rhombus are not one and the same. So if you read the agreement, from one angle it will look like an operating lease,
Another angle, it look like a financial lease. The double taxation agreement avoidance says operating leases are not taxable. It's taxable only in Ireland. Whereas if it is a financial lease, it's taxable in India. So nuancing is a professional art. You have brought out a beautiful question. He has given a good answer, but you try to nuance it on this. Where does the emphasis lie in the statement of objectives? It's very important. Great, sir. Thank you so much. Moving to the next topic, I would like to take a little next topic because I am short of time. A minute I will allow for that. A minute I will allow for that. Yes, yes. May I request the Thank you. backstage to Hello. kindly look into it, please? See, in my humble opinion, answer to this question is not straightforward. Whether credit to CSR is allowed or not, you cannot give answer to it in yes or no. You have to go to facts first. What kind of CSR is that? Because we need to take care of 17 as well. The negative items which are there. Yes. So first, as far as whether it qualifies in 16 or not, ambit mein aata hai ya nahi aata credit ke, there I am very much positive. I'll just add what Chirag said is, Chirag has given a reference of income tax law. There was an amendment in the income tax law, after that only the CSR expenditure was disallowed. Yes. If we go to the legal provisions income tax law, section 37(1) are more or less same like GST 16(1). Both says if it is a business expenditure allowed. Income taxes other than personal and capital, similar kind of thing you can find it here as well. So they are pari materia provision, I can say. So please refer the judgments of the different courts pre-amended situation in the Income Tax Act. They always said, leading judgment was the Infosys judgment from the Honorable Karnataka High Court, explains it in very great detail, that it is for the purposes of the business, number one. And that is too in reference to a definition of business which was there in the Income Tax Act. And if you refer to the definition of the business in the GST law, in section 2, subsection 17, it is much more elaborated even than the income tax law. Yes. It says any transaction in connection with, incidental, ancillary to other main objectives even. So that is why I say, as far as 16 is concerned, all CSR expenditure which will definitely qualify there. So from 16 point of view, we can say CSR will be allowed. Now coming to the other aspect, there is a issues in 17. Please do take care, क्योंकि जितने भी CSR expenditures होते हैं, most of them they are potentially may be covered in 17.5 C, D or H. Free sample gifts. Maybe, let me give you a situation. One of the clients told me that we have bought this kind of laptops, 100 laptops we bought. It is there with us. Now we distribute these laptops as and when we find any charitable cause kind of thing. Can the credit be allowed on this? If we go to answer of 16, yes, Chirag was right, it is allowed. But there is a non-obstante clause in 17.5 which says no, this kind of credit will not be allowed. So I just wanted to say this thing to this honorable house. Please consider facts of the case. Then give your opinion whether credit is allowed or not. Great. So you can continue holding the mic because I am moving the next topic and I want you to take a lead on that. So here we are talking about a cross empowerment issue, and let me first start with a little background of it, what I have been arguing in courts and also some set of facts to be clarified upon. So there's an assessee in the state of Rajasthan. If you go and look into the GSTN portal, you will find his jurisdiction is state. Obviously state has a power, so he has gotten a simple notice for the purpose of carrying out the audit. The audit is going on. During that process, what happens? He get a notice from the enforcement wing of the state. They say that we have a particular query, we wanted to ask this, kindly receive this notice. Fine. What happens? Few days after that, he receives a notice from Director General GST Intelligence saying that we are inquiring something, kindly answer, bring your books of accounts. Anti-evasion center, somewhat similar power because they are anti-evasion authority and they are within the assessees within the jurisdiction of that. They also put up a summon to him saying that we are inquiring something.
4 authorities. Now he has purchased a goods from the state of, say, Maharashtra. That assessee has purchased from someone who is scrupulous, and that is being investigated by DGGI Maharashtra, who is taking care of his own. A notice has summoned. Kindly provide your books of accounts, because it appears that the purchase what you have made is not correct. Single assessee, 5 authorities, possibly equally competent to give a notice. Where is one nation, one tax? Is that a joke? You are saying one nation, one tax. So why not one assessing officer? Why there are 5 persons who are inquiring and investigating upon the single person? That I would like the panelists to give their view upon. To start with, Jiten, please. So I think you wanted to speak first. So see, I want assessee council to argue this more, and then we definitely. Canon para 13, sir. Canon para 13, you know. Okay, Yeah. fine, please. So I think whether it is a truly one nation, one tax or not, this question should be answered by the Alok ji. Anyway, so Rahul has recently. We are going to ask whether this falls within their jurisdiction. I would like if he can comment a little. All sir will do that. So please. let me give you perspective, kal, aaj aur kal on this. Yesterday, today, and future. This is what in my manner of answering this one. Please see what used to happen earlier. See, in the earlier regime, हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स थे उसमें से मेजॉरिटी टैक्स पेयर्स वो थे जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड थे वैट लॉ में. दे वर आंसरेबल टू ओनली एंड ओनली वन अथॉरिटी. रेगुलरली एक जगह पर जाके फाइल असेस होती थी, चैप्टर एंड्स, मेजॉरिटी. उसके बाद जो नंबर, आई एम गोइंग बाय द नंबर ऑफ असेसीज, नॉट बाय द क्वांटम ऑफ टैक्स पेमेंट. सो द सेकंड लेग था, दैट वाज सर्विस टैक्स पेयर्स, एंड द अनदर वाज वैट एंड एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर्स. दिस इज व्हाट द कंपोजिशन. कुछ जो लार्ज कॉर्पोरेट्स थे जिनकी कि डिफरेंट लोकेशन पर बिजनेसेस हैं, डिफरेंट सेगमेंट में बिजनेस हैं, लाइक मे बी हॉस्पिटलिटी इज आल्सो देयर, मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो देयर. दे वर indulged with multiple kind of compliances, maybe entertainment, service, etc., etc., etc. So many things are there. Excise, VAT, service tax were definitely there. So अगर मैं प्री GST regime में जाके चेक करूं तो ज़्यादातर जो टैक्स पेयर थे, more than 60-70%, they were reporting to either one or maximum 2 departments, 2 authorities. But जो बड़े साइज के कुछ लार्ज टैक्स पेयर्स थे जिनका डिफरेंट बिजनेसेस थे, वो काफी लोगों को अपॉइंट कर रहे थे. और द ऑब्जेक्टिव अगर आप जाके देखोगे जीएसटी का, प्लीज रेफर रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स कमेटी विच वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट 2009, जो फर्स्ट रिपोर्ट था. उसमें ये बहुत कैटेगरिकली लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी इज कि इसको यूनिफाइड करना है. जो कॉन्सेप्ट वन नेशन वन टैक्स कहते हैं, दिस वर्ड वाज नॉट देयर, वन नेशन वन टैक्स, बट यूनिफाइड करना है, एक जगह पर करना है सारी चीजों को. दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड देयर कि इसका प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि आप डेटा कहीं से भी उठा रहे हैं, रिसर्च विंग में बी एनीवेयर, आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, असेस कर रहा है, ये एक ही अथॉरिटी करेगी, मल्टीपल नहीं करेंगे. एंड जिसने कर दिया है, ही विल गिव इंफॉर्मेशन टू ऑल द अथॉरिटीज. दिस इज व्हाट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड ट्वाइस, नॉट इवन वंस, इन दैट रिपोर्ट. नाउ लेट्स कम टू द फ्रेमिंग ऑफ द लॉ. दैट वाज यस्टरडे. अब आज की बात करते हैं. जब जीएसटी लॉ फ्रेम हुआ, this matter was elaborately discussed in the GST Council in January 2017. It was a 9th GST Council meeting held on 16 January 2017. Please read minutes. सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने अपने व्यू रखे और जाके देखेंगे तो एक कॉमन, सब लोगों का एक ही चीज कहना आ रहा था कि there has to be one nation, one tax, one authority. This word is written there, one authority. So जो हमारा बनना चाहिए खाका, वो ऐसा बनना चाहिए कि एक अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल हो. Now let me just add on to what you use the word cross empowerment. This word is not coined in the GST law, but we are commonly using. And somewhere in the part of circulars also Yeah, it is GST there. council हाँ, meeting, yes. separate statutory act में नहीं है ये वाला Yes. word. Anyways, so please try. There are 2 separate concepts correlated. One is cross empowerment, another is division of taxpayer base. They are done in a 2 separate manner. Cross empowerment is कि आपका स्टेट अथॉरिटीज भी CGST एक्ट के असेस कर ले या इंक्वायरी कर ले, एंड वाइस वर्सा. दिस इज द क्रॉस एम्पावरमेंट. फ्रॉम द अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उनको पावर मिल रही है ये करने की. नाउ द अनदर एस्पेक्ट इज, जस्ट गो टू द जो हमारा ऑब्जेक्टिव था. ऑब्जेक्टिव वाज
कि भाई एक अथॉरिटी रहनी चाहिए, लेकिन CGST SGST दो अलग अलग कानून है. Now what happened? CGST वाला भी असेस करेगा, SGST वाला भी असेस कर लेगा, दोनों चीजों को, तो ये तो ड्यूअल हो गया. So the concept there has to be a division of taxpayer base. So this was discussed in 9 GST Council meeting elaborately, जिसमें उन्होंने फॉर्मूला बनाया कि भाई वो जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको 90-10 रेशो में, और जो बड़े बिजनेसमैन हैं यानी कि 1.5 करोड़ से ऊपर वाले उनको 50-50 रेशो में डिवाइड कर देंगे. प्लीज माइंड माय वर्ड, इट स्पेसिफिकली सेज फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस देयर हैज टू बी सिंगल अथॉरिटी. दिस इज व्हाट इज स्पेसिफिकली रिटन. Now give me a qualification there. In the same minutes, it was discussed that if some intelligence-based enforcement action is there, in that case on entire value chain, both the authorities can work on. This is what, please mind, what I am discussing is minutes of the GST Council. It was discussed before even coming of the statutory provisions. यानी एक्ट तब तक आया नहीं था. एक्ट आने के बाद सारी चीजों को रूल्स के एक्ट आना पड़ेगा, रूल्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे. Now what happened? First official document came on 20th September 2017 on this, which is a circular by the GST Council, which clearly says for all administrative purposes, you need to ensure single interface only, and there is again the same formula was there, 90-10 and 50-50. Fortunately, unfortunately, I don't know what was the reason, but जो point था कि आपका इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट एक्शन के ऊपर दोनों कर लेंगे, इट वाज नॉट देयर. सो इट वाज नॉट देयर इन द सर्कुलर. अलाउ मी टू कंप्लीट, जस्ट थोड़ा सा बचा. इस सर्कुलर के बाद सारे स्टेट्स ने एक जो जॉइंट जो सीनियर मोस्ट अथॉरिटीज थे उनकी कमेटी बनी थी, उन कमेटी ने उठा के बाकायदा डिवाइड किया. उनका ऑर्डर भी है, जैसे यू सेड ना कि पोर्टल पर जाके हाईलाइट दिखता है. है. नो, देयर इज अ ऑर्डर. There is an order for each and every assessee, please mind it. Yes. For each and every taxpayer, there is an order which says you are into state, you are into center. Correct. And couple of states order are clearly using the term that for all purposes, jurisdictional officer will be state, jurisdictional officer will be center. So precisely, मुझे जो अंडरस्टैंडिंग आती है वो ये है कि कहीं ना कहीं एनालॉजी ये चल रही थी कि एक आदमी को एक ही असेस करे, ये कॉन्सेप्ट था. So what I understand that with respect to investigation, there was appearing some exception to be given. However, later on, you are saying there are certain documentation which is not reflecting even that. Correct. And additionally, Yes, right, additionally, what I'm trying to say is that why they can't do it in a manner that investigation completed, then they give it to the very same assessing officer. That also doesn't happen. Very true, very true. What they do? I'm coming to it. This is what happened. Unfortunately, in Rajasthan, Yes. see, in case of Sangan area case, this aspect came before the Honorable Rajasthan High Court, which was rejected. But unfortunately, please go through with that, all these circular and order were not in front of the Honorable High Court in that particular case. Fine. After that, I'm just quoting one particular case which analyzed this aspect in a great detail. Ajay Verma's case by the Honorable Allahabad High Court. They have said the same thing what you said. Fine. Inquiry anyone, if during the inquiry stage, if assessee says my jurisdictional officer is state or center, then they are supposed to give the case to hand over case to the respective one. So judicial scrutiny is still pending, but we don't have a clear-cut ruling wherein then Yes, we can. very fine. very true. Sir, over to you. 30 seconds, you want to say something on this? Okay. Yeah, please. Because I will give a department's perspective, why it is happening. It's a complicated world. Some SSCs would be under center, some would be under state. One would be giving a fake ITC to the state SSC can be giving a fake ITC to a central. And both have to be investigated in a single case. So it is not practically possible that cross-empowerment is not given. It is the need. It has to be done that the whole chain has to be investigated. So it is required. And what precautions we take in DGGI, we usually check. We have some built-in infrastructure that if this person has been given any summon by any other agency. So in central, we are usually able to check. But with state authorities, we have to check it manually. Now we are working on it, how we do it. But we also do not want that a same assessee is being investigated by two authorities. And if we come to know that it is being investigated by state, we immediately hand over our part of investigation to them. So it's not happening that simultaneous investigation is not being done. It is not taking place.
Please, sir. The matter is now settled, and we argued for almost 20 days before the Delhi High Court. Indo-International Tobacco, Justice Naveen Agarwal's judgment on this. See, this is the sequence. Today, because both union and states have to work together, Section 6 of both the Local Act and the CGST Act allows cross-empowerment. What do you mean by cross-empowerment? You may be an assessee under the state officer, but if CGST officer is investigating that, if DGGA is going to investigate into that, then you have to follow a protocol. Whoever does first, if the state does the inquiry first, state will get the opportunity. Center does it first, or DGDA, between the three, whoever does it first, they will get the chance. And once they pass the assessment, you can't pass two assessment orders merely because it is investigation, one under CGST and one under SGST. So the crossover says, whoever will pass the assessment will pass for both authorities. So there's no confusion there. The confusion is what Rahul says at the time of investigation. What happens if state, anti-evasion of that state, and DGGA, which is an all India power, and CGST officer commissioner on that, all of them sit on an assessee, he will only die. He is right. Therefore, we conceded, you see, read the judgment. If 4 people are going to attack one assessee, the precedence will be, if state does it first, it will have a precedent, no doubt. But if you are going to inquire 10 different assessees in 10 different locations, today the law is, under 14/2017 CGST notification, the power for an all India investigation power is only vested with DGGI. It's not with the state, because state are bound by the territorial limitations. So if you do it within the state, this priority will follow, whoever does it first. If it is going to be cross-border, beyond states, then if center decides, because that is what they argued, each state's authority should do. So that we said, when will we connect? This will die. This investigation will never fructify. So DGGA will have the authority. There again, you will have a harassment, which is what was projected. DGGA Allahabad, DGGA Ahmedabad, DGGA Jodhpur, 10 people can hack you because everybody has a central power. Therefore, when DGGA takes it up, they should resolve before going to the assessee who is going to do it, or whoever has done we filed an affidavit, whoever has done so far will assign it to so and so. So there can be only one investigation, and there's a tiebreaker rule. Whoever does it first will get the opportunity to do it. If it is within the state, if it is cross-border, then you will have to involve DGGI. Even in that, every DGGI who is an all India officer cannot do it. They must prioritize and hand over the file to one investigative wing. This is the law. They filed an appeal, they lost it before the Delhi High Court. They filed an appeal before the Supreme Court, and they subsequently withdrew it. Indo-International Tobacco is an authority on the point. Sir, I have a humble request on behalf of the industry that whatever you spoke now, it's if it can be Given in a circular. converted in the form of a circular or instruction, We'll do that. that will be of a great No, help. we'll to do that. industry. It is there in the judgment. We will do that. We will do that. It's a good suggestion. I'll take it. I'll take it to the council. We'll request them to do that. Great. Thank you so much, sir. It will save a lot of time. Yes. So we have last couple of minutes. I can take 2 questions from the audience, max to max 3. If there is someone, I would request the backstage team to go to them, and they can raise their hand if they want the esteemed panel to answer upon. And sir, just a quick response we need, safari retreats. If you can clarify, because there are a lot of people who are waiting and like anything that what would be the outcome of the judgment. But principally, I'm saying waiting. That's what I'm saying. I'm not expecting an outcome from you. I'm not expecting an outcome from you. Rahul, none of us can commit contempt Yes. of court. Yes. Now, I'll tell you this. Matter is sub judice. It's in the final critical hearing stage. Hearing is yet to commence. And now the matter has been assigned to me, so I'm arguing it. So I'll be committing contempt if I speculate on the outcome. But even before becoming an ASG, it has been always my reasonable view that what the trade is, you see, the concept is this. It is always the choice of the policy maker to give
a credit of ITC or not given credit of ITC. It's a policy choice. You cannot, that is exactly what they argued in Gujarat High Court. They succeeded. Matter is reserved in the Supreme Court 3 days back, and we are awaiting the judgment. We have argued that is what VKC is all about. VKC is policy choice. We gave it for input, we didn't give it for input services. They said input and inputs are going to the same, you should give. They said policy choice, how can you interfere? So there is already a VKC judgment of the Supreme Court, policy choice should not be interfered. This is at the threshold. Two, a policy choice is exercised, when can it be challenged? When you give it, when you say this industry is ineligible, then you cannot challenge it under Article 14 and say you should give it to me. Whereas if you make an ineligibility at an industry and carve out exceptions which are arbitrary, which are discriminatory, then you can say we are equals, co-equals, he is getting it, I am not getting it, is a good ground for policy choice to challenge. So when a whole industry as a set goes out of it, can you enforce it is going to be a point which we are going to argue. Even before becoming ASG, I have always expressed an opinion that you should not, what is prohibited or excluded under 17C cannot be argued and one to be brought under 16.3 through a judicial pronouncement. It can happen only through an act of legislation and not through a judicial interpretation. This is what we are going to pursue. Outcome is awaited. Any question is all? I just see from the audience, One but moment, yes, yeah. we can conclude on this. See, the basic concept of input tax credit is what? It should be seamless. But let me tell you, having studied or working under 20, 30 countries, VAT or GST, no country has what is known as seamless credit. Every country has a blocked credit concept. There are restrictions placed. And I very, very vividly remember, I think Ashok Leyland, when the central excise, when the moderate credit was Ishar Mota's case. Overnight, the moderate credit standing in the account of all the entire automobile industry in India was lapsed. Isn't it? Is that concept? No, that's different. See, lapsing of credit is different from what we are arguing. True. No, see, a credit once made available is a vested right. It cannot be extinguished if the credit is capable of being utilized and maintained. That is what Philco and all have challenged under 140, where the concept is different. You have a vested right under the old act. Yes. When you bring under GST, where entitled or not is something which you are going to debate. But Eicher Motors is the case where when ModVat was there, when the final product was taxable, you allowed credit to lapse. Yes. Which they say a vested right cannot be extinguished. Here, under 17, we have excluded you. You don't have a right at all at the threshold. When you don't have a right, how will a right vest on you? What is there to happen for it to vest? So this will be the moot question which we will be arguing in Safari. There is no concept of what is known as a seamless credit anywhere in the world. There is no example that at least I have seen across. No, we have not gone, we have not reached a stage. Okay. Whatever you pay, you can take credit is not the law today. Exactly. Therefore, you can't say that should be the law, and you can't ask a judiciary to pronounce that. At least we are going to stand up and argue to the contrary. We'll have to wait for the judgment. Keep your fingers crossed for a couple of months. Judgment will come, hopefully. One line of a caution for everyone using Safari Retreat, please mind, that judgment was very specifically with reference to 17.5D, and it was not with regard to C. Whenever you are going to take the credit, you have to see कि आपको किसी में भी fall नहीं करना है. Even if you get fall in anyone, then credit is not allowed. So take care of this. I'm not. What I understand, for the time at least retreat till you get a finality from the Supreme Court. Now, whether it is a safari ride or a safari retreat, better retreat. with this, thanks a lot to the esteemed panelists who made this 1.5 hour journey roller coaster for us
with department and SSCs arguing and someone from the institute giving their clarity on certain points, even though sir said I'm not giving the institute view. So thank you so much. With this, we are concluding today's session, and over to the MOCs for the concluding part. Thank you so much, sir. Thank you for the part of the panel. Thank you. Thank you, Rahul sir, and all the panelists. It really helped us to understand. Oh, ho, Ruchika. To answer your query, let me take you to our last technical session on the topic startup ecosystem, expectations of industry, Investors and policymakers from a chartered accountant. To begin this, may I now invite our session moderator, Senior Advocate Sanjay Jhawar sir. Sanjay sir is a chartered accountant turned lawyer. He got elevated as a senior advocate by Rajasthan High Court. Prior to his elevation, he was the managing partner of Chir Amrit Legal LLP. We are honored to have you, sir. I now invite the panelists for the session. First and foremost is Deepti Mule ma'am. Ma'am, we welcome you. Ms. Deepti runs her own consulting firm in Australia. She has more than 20 years of global experience of leading transformation initiatives and playing advisory roles in designing and improving financial processes and systems for many MNCs such as AMP, Macquarie, Northern Trust, etc. We welcome you, ma'am. I now request CA Ruchi Gupta ma'am, Secretary, Jaipur branch of ICAI, to kindly escort Shri Amit Jain sir to the dais. Shri Amit Jain sir is the CEO and co-founder of cardekho.com, a unicorn from Jaipur. Mr. Jain is also currently one of the sharks in the famous Shark Tank India Season 2. Besides Card Dekho, he has also launched Insurance Dekho, Bike Dekho, and College Dekho. We are extremely honored to have you, sir. Next, I would request CA Kuldeep Gupta sir, Chairman Jaipur branch, to please escort CA Sanjay Agarwal sir, MD and CEO of AU Bank. Sir, we welcome you on the dais. Mr. Agarwal is the first generation entrepreneur, a true visionary, a pioneer of financial inclusion, a merit holder chartered accountant. Mr. Agarwal founded AU Financials in 1996, which in 2017 became the only asset financing NBFC to successfully convert into a small finance bank. Later on, AU became a scheduled commercial bank and a Fortune 500 company. Sir, we are overwhelmed to have you with us. Moving on, may I now request CA Anshul Agarwal and CA Adesh Moore to kindly come up and felicitate CA Sanjay Agarwal sir with a bouquet. I also request CA Ashok Kumar Gupta and CA Narendra Mittal to kindly come up and felicitate CA Sanjay Agarwal sir with SAFA. I request CA Ankur Kumar Gupta and CA Naveen Sharma to kindly come up and felicitate CA Sanjay Agarwal sir with shawl. I request CA Prakash Sharma sir to kindly come up and felicitate CA Sanjay Agarwal sir with a memento.
Now I request CA Vikas Yadav and CA Akhil Pochori to present a bouquet to Shri Amit Jain, co-founder cardeko.com. Next I request CA Anil Kumar Yadav and CA Dr. Abhishek Sharma to present a safa to Amit sir. Now may I request CA Lokesh Kasat and CA Vijay Kumar Agarwal to present a shawl to Amit sir. Now I request CA Kuldeep Gupta and CA Ruchi Gupta to present a memento to Amit sir. May I now request CA Tushar Agarwal and CA Swapnil Bhandari to kindly come up and felicitate CA Deepti Mule ma'am with a bouquet and memento. Next, I request CA Naman Jain and CA Rajan Jain to kindly come up and felicitate CA Advocate Sanjay Jhawar Sir, Senior Advocate, to felicitate him with a bouquet and memento. We now request Sanjay sir to commence the session. Over to you, Sanjay sir. Good afternoon, everyone, once again, and see the panelists here. चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम नहीं करते एंड IITian है और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। प्रकाश शर्मा जी को मैंने पूछा कि ये पहले वाला सेशन तो ठीक है, इस सेशन में मॉडरेटर मेरे को क्यों बनाया है, क्या टॉपिक है, कौन स्पीकर हैं, कौन पैनलिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा मुकेश गुप्ता जी ने सजेस्ट किया है। वेरी गुड। मुकेश जी को पूछा कि भाई क्यों बनाया है, उन्होंने कहा आप स्टेज पे है। अमित जैन का नाम नहीं सुना? आप सोनी टीवी देखते हो? नहीं यार, नहीं देखता सोनी टीवी। तो यार फिर उन्होंने कहा शार्क टैंक आपने नाम सुना है? मैंने कहा यार शार्क टैंक वो जीतो में कुछ था और फिर यूएस में कुछ शो था, बट इंडिया में बोले वो शार्क है। तो मैंने कहा यार एक तरफ तुम कह रहे हो एक बैंड बजाने वाला है, दूसरा शार्क है, और ये बताया उन्होंने कि ये 10 मिनट में किसी का भी वैल्यूएशन कर देते हैं। मैंने कहा ये जबरदस्ती मेरे को इस सेशन में डाला है इन्होंने कि 10 मिनट में किसी का वैल्यू करके हाथ में पकड़ा देते हैं कि आपका वैल्यू ये है। मैंने रिक्वेस्ट करी भाई इतनी बैंड मत बजाओ, एक कोई ऐसा जरा भी दो पैनलिस्ट में जो मैं आराम से जो थोड़ा सा सोबर हो, मेरी बैंड नहीं बजाए। तो फिर प्रकाश जी ने कहा कि एक ऑस्ट्रेलिया से मेरी स्टूडेंट है वो दे देता हूँ, पक्का है वो कुछ नहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा ज़्यादा क्वेश्चन, अब कोई ज़्यादा बैंड बजने वाली होगी तो मेरे पास एक जना होना चाहिए।
So that's why we have a grand panel here today and a very big round of applause. They are known for their business acumen. They are known for professionalism in their own work. You know them more than anyone else. He's known in Rajasthan for many reasons, and he's now known all over the country. He has become a TV figure, and then you have somebody, the only expert panelist from a foreign nation in this entire conference. So that is the panel which you have today. So now let's begin. सबसे पहले थोड़ा सा चालू करते हैं साहब. ये कार देखो, इंश्योरेंस देखो, कोई सीए देखो टाइप का you have in mind? Any plan to start up something like CA देखो? Oh, great. So you must have something related to chartered accountants because you belong to Rajasthan, and Rajasthan is the birthplace of several renowned chartered accountants. CA जो होता है ना, CA वो नेचुरल फाउंडर होता है. उसका रीज़न क्या होता है कि देखो मैंने जब किया लाइफ में फेलियर बहुत मिला, फाउंडर्स को फेलियर बहुत मिलते हैं. सीए में मैं सुनता हूँ काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद होते हैं सीए बनते हैं, तो नेचुरल फाउंडर है सीए तो. So now, so what a panel. एक IITian को ये मालूम है कि सीए की फाउंडेशन कितनी मजबूत होती है, और बाकी जिनको मजबूत है उनको तो मालूम है ही. So I'll start with Sanjay, and this is a very interesting session on startup. But before the startup, हम कई बार जो सामने दिखता है, जब चमकता है और दिखता है तो हमको नजर आता है कि ये चमक रहा है, बट उसके पीछे क्या है वो हमको शायद कम पता होता है. तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा संजय से एक सवाल पूछ के, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए जानना जरूरी है. एयू बैंक संजय का फर्स्ट वेंचर नहीं है, तो I would like him to share his stories of failure before we talk about AU Bank. So thank you, sir, again for honoring me and giving me this chance to speak to my good friends there. So पहला सवाल बाद में पूछूंगा, लेकिन आपके पास ये कितने हो गए ये ग्लोब? मेरे पास 2 हैं. मेरे को घुमा फिरा के वही दे रहे हैं सबसे. अच्छा, तो मुझे भी ऐसे किया क्या? गाड़ी भी लेके चेक करूंगा. यदि 2 से ज्यादा हैं तो शेयर कर लेंगे. वो कोई बात नहीं, स्पॉन्सर आप ही हैं, वो एडिशनल बिल आ जाएगा. कोई तो मैं बोल रहा हूँ उनको, सर आपने बात पकड़ी है सर, बात पकड़ी है आपने. कोई खास बात बोल रहा हूँ कि इतने सारे मत दो यार. ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. प्रकाश जी 1 लाख रुपए में कम कर लेता. प्रकाश जी को हिसाब बनाना आता है कॉन्फ्रेंस का. तो सबसे ऊपर स्पॉन्सर्स में नाम क्यों लिखा है कि बचा कुचा सारा बिल वहीं पे जा रहा है. तो 1-2 और देंगे आपको भी. सर मैंने ये देखा है कि मुझे या तो शादी खत्म होती है, गाड़ी खड़ा होता है, सर पैसे देके जाओ. तो वो बिल्कुल आज आप बेटी के बाप बन के आए हो. सर वो तो मुझे कल ही पता लग गया था. बट टू स्टार्ट विथ जो आपका क्वेश्चन है, बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, कि जैसे मैं कल बता रहा था, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ हों अभी, कि लैंडिंग मेरे लिए बहुत नेचुरल चॉइस थी. बिकॉज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो हिसाब किताब समझना, बैलेंस शीट समझना, देना लेना समझना, रिस्क समझना बहुत नेचुरल था मेरे लिए. तो और जैसे मैं कहा था कि बॉस ने इंस्पायर किया कि हमको फाइनेंस कंपनी खोलनी है, तो एक्चुअली पहला काम तो फाइनेंस ही था यदि आप मेरे से पूछें. बट उस वक्त पैसे कमाने की ऐसी धुन थी, पता नहीं क्या बात थी उन दिनों, कि पैसा कमाना है पैसा कमाना है. तो फाइनेंस कंपनी तो 95 में खुल गई थी. 90 हाँ यस वो मुझे मालूम है, क्योंकि बाफना जी हर दूसरे साल में एक नई सेकंड हैंड गाड़ी लेके आते थे. तो मैं उनसे पूछता था फिर गाड़ी बदल ली, तो उन्होंने कहा कि संजय के पास कोई अच्छे प्राइस की गाड़ी आ जाती तो मेरे को बता देता. नहीं सर ने गलत बताते थे. वो मेरी सारी गाड़ियाँ पकड़ी भी होती थी.
2 मिनट सुन दो। बाफना जी हर दूसरे साल गाड़ी बदलते थे। सारे बाफना के लोग रात को नई नई गाड़ी में जाते थे क्योंकि हमारे पार्किंग की जगह नहीं होती थी। तो सर ये लेके जाओ अपने घर पे आज। तो वो और अंदर की बात मत जाओ सर, ये बहुत सारी बातें हैं। तो व्हाट हैपन कि उसके अलावा जब बिकॉज फाइनेंस का जो काम है वो बहुत ही स्लो है, थोड़ा आपको बहुत लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है, यू नो, टू मोर ऑन कि पेशेंस रखना पड़ता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म गेन। ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट फाइनेंस कंपनियों में पैसा कमा सकते हो, बिकॉज बहुत रीजनेबल रिटर्न मिलते हैं आप लोगों को उस वक्त। आप मतलब 2%, 1.5% आज भी वही रिटर्न्स हैं। इट टेक्स लॉन्ग टू बिल्ड अ फाइनेंस कंपनी और टेक लॉन्ग टाइम टू बिल्ड अ बैंक। तो एंजाइटी ज़्यादा होती थी कि नहीं यार इसमें तो क्या कमा रहे हैं, तो वो तो 1 घंटे का काम होता था दिन के अंदर। बट दूसरे कामों में, एंड यू नो ये बाफना तो हमेशा बहुत ही वाइब्रेंट रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन दिनों में, तो सारे काम करते थे, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, इम्पोर्ट हो, चाहे बीड्स हो, पता नहीं क्या क्या काम किए होंगे हम लोगों ने, कोई 20 काम किए थे। मैंने ट्रक भी चलाया मैंने तो। मैं ये बाफना जी बहुत बताते हैं कि संजय ने ट्रक बहुत चलाए। हाँ ट्रक भी चलाए, सब चलाए मैंने। बट मुझे ऐसा लगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्राउड देयर कि लेकिन किसी भी काम में मेरी एक्सपर्टाइज नहीं थी। मैंने बाद में रियलाइज़ किया था कि मैं खाली फाइनेंसर हूँ। चाहे मैं ट्रक का काम चलाया तो मैं फाइनेंसर हूँ, चाहे मैंने एक्सपोर्ट का काम किया तो मैं फाइनेंसर हूँ। बिकॉज ना तो मुझे कपड़ा बनाना आता था, ना मुझे सेल करना आता था। तो मैं कहीं ना कहीं मेरी एक्सपर्टाइज थी नहीं वहाँ पे। मैं एक अच्छा आपको फाइनेंस दिला दूंगा, कॉस्ट दिला दूंगा, अकाउंटिंग कर दूंगा, लेकिन मेरी एक्सपर्टाइज थी लैंडिंग में। मैं रिस्क समझता था। मैंने समझा कि यार इसको देंगे तो आएगा नहीं आएगा, इसको समझेंगे कैसे बनेंगे, प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर, बैलेंस शीट डिज़ाइन में, लिवरेज में। तो जो मेरी स्ट्रेंथ थी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो, मेरी स्ट्रेंथ थी फाइनेंस का काम, राइट। बट मैंने 10-15 जो काम किए स्टार्टिंग में ना, मैंने काम किए 96 से लेके 2001 तक। मैंने कोई 15 से 20 काम बिफोर फाउंडिंग द फाइनल एनबीएफसी। नहीं एनबीएफसी साथ साथ में चल रही थी। वो तो होता ना कि जैसे कोई आप गए आधे घंटे में काम कर दिया, क्योंकि वो स्लो काम था, उसमें इतने ह्यूज नहीं थे रिटर्न्स आपके लिए, लेकिन वो काम चलता रहा हमेशा। 95 से ही लैंडिंग का काम मैं करता रहा और आज तक भी कर रहा हूँ, अभी भी करके आया हूँ। So I think the point I want to tell is this, that your strength was not there. Right. आप वहाँ पे खाली एक तरह से फाइनेंसर थे। तो यदि आपके स्टार्टअप एज में आपकी स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहे हो और आप उस पे काम कर रहे हो जो जिस पे आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, बिकॉज यदि मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है तो एक्सपोर्ट अच्छा नहीं होगा। यदि आपकी ट्रक में ड्राइवर या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो लोग हैं, उनको आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो वो अच्छा नहीं चलेगा। सो बहुत सारे काम किए थे मैंने और अभी क्या बताऊँ, लेकिन एवरी वर्क आई वॉज मोर ऑफ ए लेंडर और ए फाइनेंसर देन ए एंटरप्रेन्योर। तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि इस काम में आप एंटरप्रेन्योर हो या आप खाली कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हो किसी एंटरप्रेन्योर को या किसी बिजनेस मॉडल को काम करने के लिए। राइट। और तो मुझे लगता है जो फेलियर होते हैं ना बहुत जगह, पीपल आर फेल बिकॉज ये तो उनकी स्ट्रेंथ पे काम नहीं किया या बिजनेस मॉडल में दम नहीं था, मे बी बोथ, राइट। So that's my view. So मेरा learning That's right. So excellent what you have said, and I'll not summarize that, but it is very important to know out of your story that you recognized your strength. Yes. And you did not got discouraged because of your failures. You kept on inventing yourself, finding out what is going wrong, where I should go, and I think that is perhaps what is the journey of startup. Sajid ji, what happened कि जब आप काम करते हो ना, तो एक चीज़ पहले डिसाइड कर लेनी चाहिए लाइफ में कि आपको क्या नहीं करना है। जैसे मैं कल बोल रहा था तो मैंने आई टोल्ड बॉस कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं ऑडिट नहीं करूँगा, मुझे ये नहीं करना है, राइट। मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता है। नेगेटिव लिस्ट पहले बनानी चाहिए। राइट। बट जब मैं काम करने पे आया, ऑल्टरनेटिव काम करने पे, तो फाइनेंस मेरा स्ट्रेंथ था, तो मैंने वो कंपनी खोल ली। बट मेरी एंजाइटी थी, मुझे पैसे कमाने थे, मुझे जल्दी कमाने थे, सही तरीके से कमाने थे, तो अलग बिजनेसेस में गया। लेकिन आई क्विकली रियलाइज कि यार ये बिजनेस मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं कुछ इसके बारे में। तो मैं लैंडर हूँ, तो मैं यहाँ लैंड करता हूँ ना अच्छे से। और तो आई थिंक वो आपको So that's how through the process you discovered your strength, and then you worked on that. You did not get discouraged through your failure, and finally you picked up what was your फेलियर। मैं बोलूँगा फेलियर नहीं थे वो, आपकी process of learning. वो लर्निंग्स थी आपकी। बट वो समझना और जल्दी से स्विच करना इज रिक्वायर्ड। मुझे बहुत लोग लगते हैं कि वो बहुत टाइम तक लगे रहते हैं अपनी ड्रीम्स पे, बात पे, और मुझे दिख रहा होता है कि भैया इसमें तो कुछ होने वाला ही नहीं तेरा यार, तू व्हाई आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये तेरी स्ट्रेंथ नहीं है या तेरा बिजनेस मॉडल नहीं है। Yes. तो जस्ट गो बैक एंड जस्ट क्विकली चेंज इट, राइट, और मे बी डू समथिंग एल्स। Right. So I take this point and I go to Amit at this stage.
I think you are identifying several startups these days. उनको आप इंटरव्यू करते हो सोनी टीवी पे. उनको मैंने यहाँ आने के पहले मेरे ऑफिस वालों ने कहा इनका एक शो देख के जाओ. आपको आप जानते ही नहीं हो जयपुर में इतने बड़े स्टार रहते हैं तो आपको जानना चाहिए. एक शो रिकॉर्डेड शो मेरे को भेजा कि ये देखो, उसके बाद उनसे सवाल पूछो. पहले वो लोगों का कैसे वैल्यूएशन करते हैं वो समझो. सो आई हैव सीन योर प्रोसेस एंड एंटायर थिंग. बट I feel that your venture, this car dekho, was like Sanjay shared right now. Was that your first venture, or before that you also failed, or you founded, like you mentioned, chartered accountants have the strong foundation. You also have some strong foundation of some of the experiments with your career? देखिए हम लोग जो मेरा जो बैकग्राउंड में IIT दिल्ली से पढ़ा हूँ और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी नहीं किया था, IIT सेकंड अटेम्प्ट में गया था. तो मेरे को फेलियर्स का CA जैसे ही CA जैसा मेरा हिसाब किताब पहले मेरे से स्टार्ट होता है, राइट. तो फाउंडेशन अपनी भी स्ट्रांग थी भाई, फेल करके हार्ड वर्क करके आगे बढ़ते हैं. फिर फाइनली आप एक बहुत रिजर्व बैंक में थे, पापा और दादाजी भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो आपका एकदम मेंटालिटी होता है जॉब लेने. तो वही सिखाया जाता है. उस ज़माने में आप यही सीखते थे कि नौकरी करनी है, बढ़िया IIT जाओ नौकरी में. नौकरी में चले गए तो 6 साल मैंने नौकरी करी है. अच्छा. वेंट टू अ कंपनी कॉल्ड ट्रिलॉजी. Okay. स्पेंड 6 years देयर. ऑस्टिन बेस्ड कंपनी थी. हाँ हाँ. बड़े अच्छे तरीके के लोग मिले. तो वहाँ पर जो लोग थे बड़े सपने देख रहे थे सारे. US में था मैं, ऑस्टिन में. हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड टाइप के बच्चे थे. और बड़े सपने थे सबके. तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हो. जो 5 लोग आपके अराउंड होते हैं ना, आपके सपने बड़े हो जाते हैं. मेरा मानना है कि अच्छे 5 दोस्त बनाने ज़रूरी हैं जो बड़ा सोचते हो आपसे. तो ऑटोमेटिकली क्या आपकी सोच बढ़ जाती है. तो मैं जब लौटा तो मेरी सोच बड़ी हुई थी कि यार कुछ बड़ा करना. लकीली एक स्टार्टअप स्टेंट मेरी ट्रिलॉजी के अंदर ही हो गई थी एंड वो सक्सेसफुल भी रही. एक अच्छा स्टार्टअप मैंने विद इन ट्रिलॉजी बना दिया था. उसके बाद 2007 में मैं यहाँ आया जयपुर अपने फैमिली रीजंस की वजह से. आई शिफ्टेड यहाँ. जो मैं पहली कंपनी चालू करी थी मैंने, वो सॉफ्टवेयर कंपनी थी वेयर वी वर बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर अदर, सॉफ्टवेयर फॉर अदर. फिर 2008 में मैंने चालू करी थी कार देखो. उसके बाद प्रॉफिट आया, उसको री इन्वेस्ट किया इनटू कार देखो. और कार देखो मैंने करीब 10-11 स्टार्टअप किए. आप लोग सुनते सक्सेसफुल वाले हो मेरे, बट बड़े सारे राइट. सो आपके पीछे भी एक फाउंडेशन एक्सपेरिमेंट की 2-3-4 काम आपने किए, उसके बाद जाके कार देखो तक पहुंचे. तो कार देखो जो बन रहा था उसमें आपका एक कोड, जैसे बोल रहा था ना संजय, आपका कोर कॉम्पिटेंसी क्या. मेरा था कोडिंग, प्रोडक्ट बनाना आता, ट्रैफिक लाना आता. ये 3 चीज़ मेरे को अच्छे से आती थी. ओके. तो मैंने इसी पे सारे स्टार्टअप बनाए अपनी कोर स्ट्रेंथ पे. ओके. तो हर फाउंडर को ना एक कोर स्ट्रेंथ होती है उसकी कहीं ना कहीं, जो उसका सुपर पावर होता है. उस पर खेलना चाहिए. आप पहले आइडेंटिफाई कर लो क्या है. अब मैंने ज्वेलरी भी बेची है ऑनलाइन, मैंने एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज भी बेची है ऑनलाइन, मैंने स्टॉक मार्केट की साइट भी बनाई है, मैंने मोबाइल भी बेचे ऑनलाइन. अरे वाह. आप जितने जो चीज़ सोचो मैंने वो करा है काम. पर हर चीज़ में लर्निंग मिली जब बंद भी किया है. तो मैंने बिल्कुल सही बोला. CA देखो.com आप करोगे तो CA की सर्विसेज को बहुत अच्छे से सेल कर सकते हो आप. मुझे लगता है और डीप में सोचना चाहिए, और यहाँ पर कोई ना कोई फाउंडर सोच भी रहा होगा इस बारे में. चलिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में नॉर्मली 2 तरह के लोग होते हैं. एंटरप्रेन्योर्स कम होते हैं. कई बार हम लोग कहते हैं जो सक्सेसफुल CA होते हैं वो बैड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादा कानून लगाते हैं. एंटरप्रेन्योर होने के लिए कानून से ज़्यादा रिस्क समझना ज़रूरी है. ज़्यादा कानून में जाएगा तो आदमी व्यापार नहीं कर सकता. एडवाइज़र ठीक है, रिस्क लेने का काम हो तो वो नहीं कर सकता. तो नॉर्मली तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में 2 तरह के लोग होते हैं. एक जो पास्ट या हिस्ट्री पे वर्क करते हैं, ऑडिट जैसा काम करते हैं, या कंप्लाइंस या हिस्ट्री, जिनके पास हिस्टोरिकल डेटा होता है उस पर काम करते हैं. और बहुत मास्टर्स होते हैं, मतलब ऑडिट के इतने मास्टर होते हैं, आप कुछ भी करके बता दो वो गलती निकाल देंगे उसमें से आपकी. कुछ भी कर दो आप. अब जैसे का नाम ले रहे थे मुकेश गुप्ता जी, आप उनके पास जाओ, इतने बड़े ऑडिटर हैं, आप अपनी गर्दन काट के उनके सामने रखो, वो कहेंगे थोड़ी सी टेढ़ी कटी है. तो वो they are masters of audit, all of them. But there are some chartered accountants like इनके जो दूसरे बॉस अनिल बाफना जी, जो पास्ट पे नहीं फ्यूचर पे काम करते हैं, प्रोजेक्शंस पे काम करते हैं, बिजनेसेस कैसे होंगे आगे की तरफ देखते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं. डेफिनेटली आप दोनों लोग वो फॉरवर्ड लुकिंग हैं. तो आपको क्या लगता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आजकल कई सारे नए नए काम आ रहे हैं, आप लोग एज बिजनेसेस चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो ऐसी कौन सी सर्विस, उनकी स्ट्रेंथ, जैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ पहचानी, एक जनरल चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ होती है जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, और वो आपको लगता है कि अगर ये काम करे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो शायद ऑडिट से या उनके दूसरे फंक्शन से, ऑडिट साथ में चले, सब कुछ चले,
लेकिन उस काम की स्ट्रेंथ के बेसिस पर बिजनेसेस के लिए वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वैल्यू एडिशन करने वाला हो सकता है, बिजनेसेस को फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो उसको बाहर निकल के अपनी स्ट्रेंथ का, इतना तो भारी भरकम टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है, 2%, 5%, 10% लोग पास करते हैं, तो उनका दिमाग तो है, लेकिन जो उनकी कंडीशनिंग है वो एक अलग तरीके से हुई है। तो उसमें से कैसे बाहर निकल के कौन सी स्ट्रेंथ को यूज करके क्या काम करें कि आप लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो, और आप लोग सोचें कि इन सब कामों के लिए हम खाली ऑडिट के ठप्पा लगाने के लिए नहीं, बट इनके लिए हम सीएस को यूज करेंगे। सो कैन यू जस्ट एडवाइस? देखो मेरा मानना है यहाँ सभी सीए है यहाँ पर, तो यहाँ पर सीएस की, और हमारी कंपनी में भी 150 सीए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसा। अच्छा, आपके तो ये दोनों लोग सीए के बड़े भारी भरकम एम्प्लॉयर हो, इनके यहाँ भी मैं देखता हूँ बहुत सारे सीए हैं, आपके यहाँ भी बहुत सारे सीए। तो कंपनी लास्ट जाती सीए तो के बिना काम नहीं चलता। बट रियलिटी के अंदर क्या है कि जब मैं सीए से मिलता हूँ, मैं थोड़ा हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल लगे आपको, बट रियलिटी में लोग मेरे को, जब मैं अपनी मीटिंग में भी बैठता हूँ तो उनका सबसे पहला टेक होता है कि ये क्यों नहीं कर सकते, और फाउंडर का टेक होता है ये कैसे करना है। तो अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है, इतना कंडीशन होते हैं कंजर्वेटिज्म से कि भाई ये ऐसे ही होएगा, रूल बुक ये है, रूल बुक ये है, रूल बुक ये है, और फाउंडर के उसका तो पता ही नहीं होता, रूल ही नहीं पता, जिसको रूल नहीं पता वो रूल दे कैसे खेलेगा। तो फाउंडर आता है भाई ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। मुझे आज भी याद है जब पहली फंडिंग हुई थी हमारी, तब हमसे बोला भाई बोर्ड मिनट लाओ, मतलब भाई क्या बोर्ड मिनट, कौन से बोर्ड मिनट तो मैं अपने सीए साहब को कॉल लगा के था, हाँ यार हमें थोड़े बहुत बनाए हैं, बाकी आप ये सारे इवेंट लेकर आओ, उनको डालने पड़ेंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि सीए के बिना आपका काम नहीं चल सकता, तो श्योर है, और आपका जो आपने अभी तक खड़ा किया है वो सीए के बिना पॉसिबल नहीं था। मैं दो चीजें ऐड करूंगा, अभी 2 चीजें ऐड करूंगा, अभी तो मैं चालू करूँ अपना आंसर। तो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले जो एक कंजर्वेटिज्म है ना, वो कब हट सकता है, डेयरिंग कब आएगी, जब आप ये थोड़ा अपना नजरिया बदलोगे कि कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ हो नहीं सकता। मुझे क्या लगता है सीए के अंदर दिमाग बहुत होता है, क्योंकि डेप्थ ऑफ नंबर्स, पैटर्न्स बहुत हैवी मिलता है ट्रेनिंग आप लोगों को। आप लोग नंबर्स देके बता दो यार ये ठीक नहीं है, ये गलत है, फलाना है, नंबर्स का ज्ञान तो बहुत तेज है, तो धंधा करने का ज्ञान भी होना चाहिए। धंधे में थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए होती है, थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी चाहिए होती है, वो है कुछ में तो है। ये तो बैठा बगल में बैठा है, जो प्रैक्टिस नहीं करते वो कर लेते हैं धंधा। तो मेन पॉइंट है, जैसे मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल बनाता हूँ। मैं अपने बोर्ड रूम में अगर मान लो डिस्कस कर रहा हूँ अपने सीए, जो अपने सीएफओ के नीचे टीम है, कंट्रोलर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, वो नंबर देख के बताएंगे देखो अमित ये नंबर है ठीक नहीं आ रहा ट्रेंड में, मतलब इस नंबर का मतलब बताओ, कितने लोग हैं, इसका मतलब क्या है, इस नंबर का मतलब कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, तो वो नहीं पता। एक नंबर पता होना वर्सेस ग्राउंड रियलिटी में धंधा कैसे चलता है उसका ज्ञान होना, उसको मैरी कर जाएंगे जब सीए, वो धंधे वाले बन जाएंगे। आपको नंबर पता होना जरूरी, मतलब वो नहीं कि आपको नंबर बताओ, आपको पता होना चाहिए इस नंबर का मतलब क्या ग्राउंड पे। तो उनकी इमेजिनेशन, उनका ग्राउंड वर्क तो उनको किया हुआ होता है, लेकिन उनका परसेप्शन उनको बदलना पड़ेगा, इमेजिनेशन, उनकी कंडीशनिंग ये करनी पड़ेगी कि वो पहुंचे फिलोसॉफी तक, रादर देन खाली कैलकुलेशन तक पहुंचने की जगह। मतलब मैथमेटिकल होने की वजह रियल ग्राउंड का बेस का मतलब क्या है इस नंबर का। और देखो फाइनली अब क्या हमारे क्या कौन वैल्यू ऐड करता है रियल में, जो इन नंबर से स्ट्रैटेजी बना पाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे हमारे सीएफओस कौन बनते हैं, जो लोग उस नंबर से बेसिकली मेरे को गाइड करवाते हैं। हमें देख इनसाइट ये कि सीएम लेवल को इंप्रूव करना है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का लेवल 2.8 से 3.2 ले जाएंगे, और ये चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द न्यू एज सीएस। That's It's right. not about numbers and audits. It's not that there are no such CAs who are. There's so many in my own company. There are many who are working in that direction. They are becoming advisors. They don't do traditional practice. They do all that. So, my same question to you, Sanjay. What would you advise to the professional fraternity? What work they are doing is phenomenal. Without them, businesses cannot function. But what more they can do, looking forward in next 10 years, what is expected as an industry? What do you expect from this CA fraternity to do? तो सर उससे पहले मैं थोड़ी इससे बात कर लेता हूँ 2 मिनट। तो सर देखिए ऐसा मुझे ऐसी फीलिंग है, और कि जो इंजीनियर लोग फाउंडर होते हैं ना, वो हर साल 1000 करोड़ पे खोते हैं, और जो सीए फाउंडर होते हैं वो हर साल 1000 करोड़ कमाते हैं। तो ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि इंजीनियर बन के फाउंडर बनना है या सीए बन के फाउंडर करना है। और मैं नहीं, वो बहुत सारे लोग बोल देंगे नौकरी उनके यहाँ करनी है, शेयर आपके खरीदने। हाँ सर, और आखिरी में नौकरी करने भी आओगे, आखिरी में नौकरी करने भी आओगे, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी तो सर उधर ही है।
वो तो आप 10 बजे तक 10 बजे से पहले घर जाने वाले को तो आप कामचोर समझते हो। सर समस्या देखिए, नौकरी करने कौन आएगा? सर हमारे यहाँ 3 शिफ्ट हैं, मैं 20 वाली शिफ्ट में काम करता हूँ। अच्छा सर कॉल सेंटर आप ही तो बोलते हो कि 24/7 चलाओ, बताइए सर। तो सर देखिए, मेरी एक लर्निंग है इस बारे में, और आई वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी कि जो इनोवेशन होता है, या जो अमित ने किया, कार देखो बनाई, इंजीनियरिंग करी, कोडिंग करी, तो पहले भी ज़माने में इनोवेशन हुए हैं सर, बिजली बनी है, प्लेन बने हैं, पता नहीं क्या क्या बना है लाइफ में, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, लेकिन बहुत कम एग्जाम्पल हैं जिसने इनोवेट किया उसने कमाया। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि मैं इनोवेट कर रहा हूँ और मुझे बिजनेस मत करना है, ये दोनों अलग अलग खिलाड़ी हैं सर, अलग अलग गेम है ये। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार जो इनोवेट कर रहे हैं ना, उसको जो कॉस्ट लगी उसको डबल लेके चले जाना चाहिए। बिजनेस मॉडल तो अलग बनेगा, उस पर बनेगा या नहीं बनेगा ये सीए डिसाइड करेगा। ओह वेरी गुड, तालियां बजाओ सब संजय जी के लिए। सो ये नहीं, ये रियल बात है। मैं सीए मतलब मैं सीए हूँ इसलिए सीए बोल रहा हूँ। मैं तो खाली ये कंफर्म कर रहा हूँ, इनोवेशन एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट सब्जेक्ट। सो इंजीनियर्स का काम इनोवेट करना है, सीएस का काम धंधा करना है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि 2 सब्जेक्ट हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप इनोवेटर भी हो और आप बिजनेसमैन भी हो, लाइक यू नो मे बी लाइक स्टीव जॉब, राइट? बट एवरीबडी कैन नॉट बी स्टीव जॉब, राइट? तो मुझे ऐसी फीलिंग है कि व्हाट हैपन कि जो टॉप 10 लोग बन जाते हैं, फिर वो अपने इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक वो हर्ड मेंटेलिटी आ जाती है, एंड दैट इज व्हाई दी होल, आप देखते हो ना कि 100 में से एक सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो जो सक्सेसफुल हो रहा है हो सकता है वो इनोवेटर नहीं हो, वो कॉपी कर रहा हो, या वो सीए हो, या वो बना रहा हो। सर आप देखिए तो सही कि आप 10 साल से मैं देख रहा हूं कि भाई तुम यार पैसे कब कमा के दिखाओगे, तो बताओ। हर मीटिंग में तुम अगली मीटिंग बोल देते हो यार कि सर हर साल नेक्स्ट ईयर पैसे कमा लेंगे, वी हैव वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड, वी वांट टू इन्वेस्ट मोर, नेक्स्ट ईयर विल बी गुड। अब कोविड आ गया, अब कोविड के बाद ये आ गया, अब यूक्रेन आ गया, यूक्रेन के बाद अब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के बाद अब है। अरे तो भाई देयर इज नो परफेक्ट वर्ल्ड सर, वी नीड टू बिल्ड एवरीथिंग इन परफेक्शन। कुछ नहीं आया। आपको स्टोरी बताता हूँ, हम बैंक का लाइसेंस आया 2015 की सितंबर में, 2016 में क्या हुआ? डिमोटाइजेशन हुआ। 2017 में क्या हुआ? जीएसटी हुआ। 2018 में क्या हुआ? एनबीएफसी क्राइसिस हुआ। 2019 में क्या हुआ? पीएमसी क्राइसिस हुआ। 2020 में क्या हुआ? यस बैंक हुआ। यस बैंक हुआ सर। उसके बाद क्या हुआ? 2020 में कोविड आ गया, 21 में कोविड, 22 में यूक्रेन। तो भी एयू तो 40% ग्रो कर रहा है हर साल। तो ताली तो बजाते नहीं हैं। तो सर जब तक बिजनेस मॉडल सेटल नहीं है, जब तक बिजनेस मॉडल सेटल नहीं है और वो वेटेड नहीं है सीए से, इनके 150 सीओ से मैं बात करूंगा, तुम्हारे होते हुए नुकसान क्यों हो रहा है? तो पता है आधे लोग क्या बोलेंगे? आधे लोग पता क्या बोलेंगे? उन्हीं की वजह से हो रहा है। नहीं, आधे लोग बोलेंगे अभी सुनता ही नहीं है। सुनता ही नहीं है सर, ये इसको अपनी मन की करनी है। सर ये मतलब माफ करना, ये सीए कॉन्फ्रेंस है। नहीं दूंगा। So, and taking the next question from you, can CA be, can, no कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोग क्वेश्चन में ज्यादा मजा इस मसाले में ले रहे हैं मेरे ख्याल से। Can CA be good businessmen also? Can they found the startup? Fresher chartered accountants के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो आपकी बात से क्लू लेके कि क्या CAs वेंचर कर सकते हैं कोई बिजनेसेस में? क्योंकि जो आपने बताया CAs के काम करते हुए वो रिस्क ले लें, ये तो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग होती है, जो सिखाया जाता है, इंडिपेंडेंस, ये दूरी, क्लाइंट से दूरी, आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, तो उसमें आपकी जो रिस्क एपेटाइट को कम कर दिया जाता है। हमारा प्रोग्राम ही ऐसा है, जैसा उस प्रोग्राम में करना ही ये होता है, आपको हर से आर्म्स लेंथ की दूरी रखनी होती है सब चीज़ों से, आपको चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है इंडिपेंडेंस रखने की वजह से। तो जब तक आप काम अपना प्रोफेशन वाला कर रहे हो, तब तक आप वेंचरर नहीं हो सकते हो। बट सपोज यंग लॉट में से कोई ऐसा करना चाहे कि मुझे नया बिजनेस करना है, डू थिंक दैट
they can, because इन्होंने तो बहुत जोरदार सपोर्ट किया मेरा मानना कि है ऐसा कर सकते हैं. What do you मानना think? है कि हर सीए धंधा कर सकता है, मेरा तो बिल्कुल ये मानना है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मैं तो ये बोलूँगा जिनकी ट्रेनिंग है तो वो भी कर सकते हैं. इट्स जस्ट अबाउट नॉट थिंकिंग मैं नहीं कर सकता. आप सोचोगे तो करोगे ना, अगर आप सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे. और एक बार आप कूदते हो ना चीज़ें करने, तो आप खुद ही फिर सोल्यूशन ढूंढने लगते हो. जिनको आप पहले अपोज कर रहे होते होगे मतलब इन दैट रोल, फिर आप उसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन खुद ढूंढ लेते हो. आई थिंक पानी में डालो तो स्विमिंग तो सीखनी पड़ती है ना, दैट्स व्हाट आई बिलीव. और जितना जल्दी कर लोगे, सीए एक ऐसी स्किल है जो लाइफ भर रहने वाली है वो ठप्पा. तो नौकरी तो आप कभी भी कर सकते हो. देखो मैं उसको डिमीन नहीं कर रहा था, जस्ट टू बी क्लियर. सीए जो है एक ऐसी स्किल है जो लाइफ लॉन्ग रहेगी आपके पास, और आपको कभी भी नौकरी मिल सकती है सीए की. राइट और रॉन्ग? ये तो मानते हो आपको कभी भी जॉब पे दोबारा जाना हो तो आप जा सकते हो. तो इसका मतलब ये कि अपने एक ऐसी स्किल है जो परमानेंट है, जो हट नहीं सकती अपने से, अपने को मिल गई है. तो अब अगर धंधा ट्राई करते हैं तो एक लर्नेड सीए बन के जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द ग्राउंड लेके जाएंगे. और भले अपना धंधा ना भी चले, फर्क नहीं पड़ रहा, बट बहुत नॉलेजेबल सीए बन के जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ नंबर्स एंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड विल बी इंसेनली हाई. तो मेरा तो रिकमेंडेशन है कि सब जनों को यहाँ पर जितने भी बैठे हैं एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अब जो कर रहे हो वो तो अब दोबारा 1 साल के 2 साल के ब्रेक के बाद भी कर सकते हो, इन केस ना भी चले. और उसमें लर्निंग एक्सपीरियंस जो होगा मतलब इट विल बी इमेंस. सेकंड एक कस्प चल रहा है. आप लोगों को एज सीए क्या सोचना पड़ेगा, आप सीए नहीं हो पहली बार. आपको सोचना पड़ेगा मैं क्रॉस हो रहा हूँ बिटवीन वन इंडस्ट्री विच इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्किल, वन स्किल, और सेकंड स्किल है इंडस्ट्री स्किल. इसके जो क्रॉस बॉर्डर पे दोनों स्किल ले लेंगे ना, वो सक्सेसफुल होंगे. जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ऑडिट करते हो किसी चीज़ का. अब कोई सीए बोलेगा यार ये मैनुअली क्यों करते हैं, इसमें ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लगा सकते. और वो इनोवेट करेगा उस साइड पे जहाँ पर एक नया इजाद निकलेगी और मार्जिन स्ट्रक्चर हो जाएगा. मैन पर आवर्स की बजाय हो जाएगा कि अब 90% का मार्जिन है, क्योंकि ये जैसे हम गाड़ियों का एग्जांपल लेता हूँ. हमारे एक सीए नहीं लगाया सोल्यूशन. हमारी गाड़ियों को हम लोग ऑडिट कराते थे मंथली कि कितनी गाड़ियाँ हर शहरों में खड़ी हैं. 50 शहर में गाड़ी खड़ी है, अब हर मंथ गिननी पड़ती हैं. तो सीए ने क्या किया हमारे, उसने एक टेक्नोलॉजी लगवाई जिसमें सब में हमारा एक डिवाइस लगा दिया, सिम कार्ड चिप, एंड आई कैन ट्रैक ऑन अ स्क्रीन राइट नाउ रियल टाइम. और उसके उसमें डलवा दी जो उसका स्टीयरिंग होता है ना, तो बाहर नहीं निकल सकते, उसको सील करा दिया स्टीयरिंग का जो रॉड होता है उसके अंदर. अब मेरे को ऑडिट कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. मैन पावर लेसे मैं पहले महीने के 10 लाख 11 लाख खर्च करता था. अब एक बार का वो एक डिवाइस लगा मेरा 1800 रुपये का वन टाइम एक्सपेंस, एंड ऑल माई कार्स आर नाउ अंडर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. अगर बाहर भी निकलती गेट से मुझे पता होता है. तो सीए जो क्रॉस फंक्शनल सोच पाता है ना कि टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ जो मैं ऑडिट में कर रहा हूँ या जो मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज द रियल. Very good. So that is perhaps the best skill of it. CA can have a multidisciplinary thinking, and therefore he is perhaps the person who can become an interface between the business and technology, and he can solve between customer and the entrepreneur. He has a role, or the techniques which he has, the equipments which he has, make him very fit person to become an interface between businesses and government, businesses and other side customers, so they can be very well used. One question which I would like to ask, आप दोनों लोग जयपुर में आपने हेडक्वार्टर रखा, जयपुर बेस्ड अपनी छोटी सी जर्नी चालू करी और आप इतने बड़े स्केल पर पहुंचे हो. एक ने बैंक बना लिया, आपने कार देखो जैसा एक बड़ा सेटअप क्रिएट कर लिया. तो ये कई बार सीएस को लगता है कि ये जब यहीं पे स्कूटरों पे घूमते रहते थे या ट्रक चलाते थे, या तब तो बिल्कुल नॉर्मल टाइप के आदमी थे, और अब वहाँ एक बार लेडर अप होने के बाद में उसकी बात कहते भाई हमको हमारा ऑडिटर बिग 4 चाहिए. और ये जयपुर वाले कोई थोड़ी बहुत सिंपैथी आपकी ये होनी चाहिए. यहीं से आप भी 4 बार फेल हुए हो, यहीं से बड़े हुए हो, अब बड़े हो गए होंगे, बहुत बड़ा बैंक होगा आपका, बहुत बड़ी कार देखो होगी, लेकिन इन लोगों के बीच में उठे बैठे हो. तो ऑडिट आपको बिग 4 चाहिए, आपको हर कंसल्टेंट वो बेन एंड कंपनी चाहिए, मैकेंजी चाहिए. तो भाई हम इतने बुरे नहीं हैं, यहाँ वाले लोग बहुत अच्छा काम करते हैं. मैं 10 लोगों को कम से कम जानता हूँ बहुत अच्छा काम करते हैं. व्हाई दिस fancy or attraction towards big 4, or even your investors do that, you do that, why that? I'll explain that. It's very simple. मैं तो कहूँगा यहाँ पर ज़्यादा काबिल लोग बैठे होंगे जो बिग 4 से ज़्यादा काबिल हैं. जस्ट टू बी क्लियर, मैं पर्सनली जानता हूँ राधे. अब जो हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं ग्लोबल होते हैं, और उन लोग का कंफर्ट सिस्टम होता है जो 4-5 फर्म्स उनके अराउंड होती हैं, जो उनके साथ उनका ट्रस्ट लेवल इस्टेब्लिश्ड है यूएस में, यूके में. तो उन लोगों के साथ उठे बैठे उनके पार्टनर्स के रिलेशन ऑलरेडी हैं. जब इंडिया आते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि सिमिलर लेवल ऑफ ट्रस्ट लेवल जो वहाँ पर है, एंड इट इज़ गवर्न बाय से फॉरेन इन्वेस्टर्स.
आप देखोगे इंडिया के लोग अगर इंडियन इन्वेस्टर है तो वो पुश नहीं करेगा आपको बिग फोर के लिए, आपको फॉरेन इन्वेस्टर ही हमेशा पुश करेगा. हैविंग सेड दैट, अगर आप नोटिस करोगे तो ये बिग फोर भी अपन लोगों को यूज करते हैं बहुत सारे कामों में. इट्स अ होल कम्युनिटी दैट वी आर. इट्स नॉट लाइक कि बिग फोर को काम आ रहा है केवल. अगर मैं मान लो ऑडिट भी दे रहा हूँ, ईवाई को भी दे रहा हूँ, हमारे लोकल जयपुर के इतने सारे लोग इन्वॉल्व है फॉर कंप्लीटिंग दैट फुल थिंग. तो इन ऑल फेयरनेस आई थिंक दिस इज अ फिनोमिनन दैट इज बिकॉज ऑफ दैट. बट क्या इंडिया से ग्लोबल फर्म नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? बनाओ, जयपुर से बनाते हैं. और यहाँ पर अपनी पहचान बनानी होगी अपने को कि हम लोग एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी बनाई, बाहर के लोगों की ऑडिट कर रहे हैं, इसलिए हमारे को बाहर से कमाना. अलग से बात करूंगा मैं बाद में सेशन. बिल्कुल. तो मेरा व्यू ये कि यहाँ से भी बन सकती है. और अभी ये गवर्नड है कैपिटल, क्योंकि जहाँ जिसका पैसा उसका सिक्का, तो जो वो बोल रहा है करना पड़ेगा. पर मान लो पैसा इंडिया से जा रहा हो तो मैं बताऊंगा ना यार कहाँ का सीए आपको रखना है, कौन सी फर्म रखनी है, वो मैं बताऊंगा. तो अभी इंडिया उस स्टेज में आ रहा है, इंडिया द ग्रोइंग इकोनॉमी, वील हैव एनफ कैपिटल इन 2 decades टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज. आप तो एक छोटी सी चीज बताओ, हमारे लोग, राजस्थान के लोग क्या अपने आप को कौन सी चीज में इक्विप करें कि चलो सारा काम नहीं आए, बट वो जो बिग फोर को आप दे रहे हो 10-20%, 30%, कुछ काम मीडियोकॉर फर्म्स जो 5-10 जिसमें पार्टनर हैं, लोकल है, राजस्थान की है, उनको आप बिग फोर की जगह प्रेफर करें. आप दोनों से ये सवाल है और दोनों को आंसर देना है इसका. आप करो फिर मैं करता हूँ. मेरे तो आंसर है. दूं? पहला जो आपने पूछा कि बिकॉज ये सवाल मेरे से ही पूछा गया था जब हम लोग बिल्ड कर रहे थे, और अमित तो सही बोला कि फॉरेन इन्वेस्टर आता है या कोई बड़ा इन्वेस्टर होता है उसको कंफर्ट ही उनसे होता है. बट आई थिंक ये आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, जैसे मैं सवाल पूछूं अभी कि एचडीएफसी बैंक या एसबीआई में कितने लोगों के अकाउंट है यहाँ पे? मेरा भी है. नहीं आप पूछो ना एक मिनट. हाँ भाई, किन लोगों के बड़े बैंक्स में अकाउंट्स हैं? हाथ खड़ा करें. और एयू में कितने हैं? और किन लोगों के एयू में अकाउंट है? देखो अभी तो बराबर आ रहा हूँ, जयपुर में है ये, और मैं स्पॉन्सर भी हूँ, बट ये ट्रस्ट का सवाल है. नहीं देखिए एयू में इसलिए है क्योंकि 7-7.25 मिल रहा है, और एचडीएफसी में पता नहीं क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्रस्ट है ना, इसलिए 3.5 पे भी खुश हो आप लोग. तो व्हाट आई वांट टू से कि ये ट्रस्ट बिल्टअप है, क्योंकि जो लेगेसी है, जो चीज़ें हैं, जहाँ विश्वास होता है, बात होती है, तो ये जर्नी है. मुझे नहीं लगता संजय भाई कि हमको इतने परेशान होने की ज़रूरत है. जैसे मैं आपको अपना आइडिया देता हूँ कि जब हम शुरू में आए थे तो हमको बोला गया था कि आपको ईवाई रखना पड़ेगा या डेलॉयट रखना पड़ेगा, और वही आए. बट अभी आरबीआई ने चेंज किया, तो हमने बोला कि 2 ऑडिटर रखने हैं, तो दूसरा हमने लोकल ही रखा है, इंडिया का रखा है, विच इज जेम कपाड़िया. ओके. और आई वुड से विथ लॉट ऑफ प्राइड कि हमारा जितना इंटरनल ऑडिट का वर्क है वो सारे जयपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. अरे वाह, बस बहुत बढ़िया. एक ही कंडीशन लगी हुई है कि एक बाफना नहीं हो सकती. अच्छा. मैं ये सर को बोलता हूँ कि सर जिस दिन मैं एमडी नहीं रहा ना तो एक बाफना भी आ जाएगी. लेकिन उसके अलावा बिकॉज अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कि आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखना चाहिए, आपकी वॉइस दिखनी चाहिए, आपको ब्रांड पे काम करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस, आपको ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी. और मैंने देखा है सर कि ये बड़ी जो कंपनियां हैं इसमें लेयरिंग होती है. तो क्या होता है, 2-3 पार्टनर्स होते हैं, तो किसी इन्वेस्टर का किसी से कॉन्टैक्ट है, मेरा किसी से कंफर्ट है, तो देयर इज अ वे वेयर थिंग्स आर कंट्रोल्ड. मुझे लगता है इंडिविजुअल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है उनको क्योंकि इंडिविजुअलिटी होती है, तो आपकी ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बिल्ड करने में और टाइम लगेगा आपको. लेकिन यदि तो आप अगर यहाँ की फर्म्स मान लो 5, 6, 7, 10 पार्टनर वाली हो, जैसे मतलब आप जयपुर की किसी से जो बात कर रहा है, हमने तो जैसे अब मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज सभी मेरे दोस्त लोग हैं, लेकिन जैसे नाम आता है हमको लगता है इनको करनी चाहिए. क्योंकि वहाँ लेयरिंग है, विंटेज है, आपकी एक पोजीशनिंग बनी हुई है. तो मुझे लगता है कि ये जर्नी है, हमें इस पे ओवर डिस्कशन नहीं करना चाहिए. जैसे अमित ने बोला अगले 20 साल में इंडियन कैपिटल आएंगी, इंडियन एंटरप्रेन्योर बड़े हो जाएंगे, आप में वो बात आ जाएगी कि यार वो ट्रांसपेरेंसी बनानी है, वो ट्रस्ट क्रिएट करना है, जैसे हम कर रहे हैं, तो वही करना है, राइट. तो आई थिंक ये झगड़ा चलता रहेगा सर, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा भी लगता है कि आप 5 स्टार में शादी क्यों करते हो? क्यों करते हो? ना खाना अच्छा होता है, ना आपकी सेवा की जाती है, लेकिन वो लड़की वाला सोचता है मैं माथे की लूं, तुम तो यही टिका दे, क्योंकि 5 स्टार है ना. तो आप भी वो बिग फोर इसलिए पकड़ा हुआ है आपने. मैं नहीं बोल रहा, वो उनके ऊपर टिकाने के लिए पकड़ा हुआ है. तो कई बार क्या होता है, समझ में आ गया सर. बिल्कुल समझ आ गया. जबकि लोकल हलवा ज्यादा अच्छा होता है कई बार. तो
तो ये तो आपको डिसाइड करना है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है जितने भी यहाँ सीए फ्रेंड्स बैठे हैं मेरे। अभी क्या न्यू एज चीजें आ रही हैं, जब देखोगे ईएसजी चार्टर बहुत बड़ा हो चुका है, $1 ट्रिलियन का फंड एलोकेट हो चुका है। मैं आता हूँ ईएसजी पर आता हूँ। उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दीप्ति से पूछना चाहता हूँ, नहीं तो दीप्ति देखेगी कि मेरे को पैनल से इन दोनों जेंटलमैन ने मिलकर बाहर कर दिया। अब ये I'm actually enjoying them. So yeah, that's okay. great. So Deepti, you have been working in Australia for very long, I suppose. I think for how many years? 15 years? For around 12 years now. 12 years? And you have been advising the banks there, Yes, right? primarily. And treasury operations or something else, right? Yeah, more into operations risk. Which one? Operational risk. Operations. Yeah. So when you see these startups, the story of startups in India and the story of startups in your country, Australia, what is the difference? What is the major difference you see? Because what I know, Australia is very different as compared to India. And when I went there before about 20 years, I was at Darling Harbour and there was a huge celebration, and I asked, what is this celebration? And they said that the bank was doing the celebration, and I asked, what is the celebration? They said, today we have closed our 10 more branches and this is what we are celebrating, you know, before 20 years. And in India, when I came back to India, तो यहाँ देखा Bank of Allahabad ने 1001वीं ब्रांच खोली है, उसका celebration हो रहा है. मतलब see, it was just reverse. वहाँ बैंक बंद करने का celebration हो रहा है. That now every vendor is our bank. यहाँ बैंक खोलने का celebration हो रहा है branch का. So it's so different. So when we talk about startup, what is the difference in the startup stories there? Do you find the entrepreneurs doing like that, growing, becoming as big as Kardeko or maybe anyone else? Or you don't have the concept of startups in that country, and how does that go? Sure. So firstly, thank you for having me here and giving me this opportunity to share the platform with esteemed guests and the fellow CA members. When it comes to startups in Australia, there's been a recent survey that they said almost 4 in 5 startups are fresh in university graduates, and 50% of the business incubators are located in universities. So if you join the dots, you would realize that these are the universities that are actually giving them opportunities to, one is whatever support to start, to build a prototype, and then to actually give them office spaces, physical spaces, and also to then eventually end up doing venture capital financing. So अगर आप ये देखोगे, जितने भी startups हैं, उन्होंने already waters को test कर लिया है. They've got the feedback, and they are confirmed that they know what they are doing. So that is the difference than what you see in here. वहाँ पे universities में students attract किए ही जाते हैं जब उनके पास startup strategies होते हैं. So that is the level of confidence that a startup has just when they get into the market. Because they've tested, they know, they've built the relationships, everything is going. But probably what is lacking, and the reason why they're not being successful in scaling higher, is because वो सिर्फ concentrate early stages पे कर रहे हैं. They are not concentrating on the growth stages. As to finance तो start करने के लिए मिल रहा है, but to continue करने के लिए, and what are their growing up, scaling up strategies, उस पे they are not investing enough. And this is where I think we as in India, because it is more densely populated, it is more consumer based, we can actually start thinking about how we can help them scale, bring that scale in the economy. So I think that is where there is a little bit of a merger opportunities in the startups from India as well as Australia. But yeah, the Australian startups, as I said, they're good to start with, but sustain karne ke liye, it is difficult. And the other major reason is they don't take enough risks. Even today, that the same survey said 90% of their activities are actually being outsourced, but they outsource those activities to other small firms in Australia itself. And out of those 90% of the activities, 70% are related to accounting, legal, and software development. And again, they are restricting only to Australia base and to the Australian startups. So this is where I think there is so many opportunities for synergies for the Indian startups to come up and to actually start working with them and give them that large consumer base, so and bring in that risk element and then help them flourish. And just a question different from this question, that
what Indian chartered accountants can do for Australian businesses sitting right here without going to Australia? Are there any opportunities where Indian accountants, chartered accountants, can offer their services to the Australian businesses? Yeah, sure. So now this is purely from my perspective and based on the experience and the kind of projects I have seen in the financial services industry. The new trend that is coming up is, we all know that the financial services industry is highly regulated. But in these days, the regulators now, they're not just coming up, doing an assessment, issuing a letter, and then the companies are making a commitment saying, we'll address all your findings by a certain date. They are now wanting to be involved in the entire process of upliftment. So what I mean by that is, they're looking for the companies to actually give them an update on what is the progress they are making to make that change happen in the organization, and not just come up saying, this is the change, this is what we have done, and this is how we have addressed the finding. Yeah. So as a result, what is happening, companies are now hiring independent assurance providers that can actually give that little bit of an assurance to the regulators that, you know, the journey is going well, and they are in a process of actually achieving the targets. So it's not necessary that chartered accountants are only restricted to the tail end of the value chain, but to second your thought, we can actually come in the journey and much in the front so end. that of can the be value done. chain. So that's an Absolutely. opportunity for the And chartered that's pretty accountants. much what I've been doing for past decade. So it's pretty old overseas. Thank you. Thank you for that insight. And Amit, coming back to you. So you have been as a shark interviewing the startups. You are assessing their past. You are assessing their value system. You are assessing the wealth of their concept or strength of their concept and the business model, and then also the numbers and other things, and then you decide whether to take up a particular startup, select it for investment or not. What we know that there was a time in India also where VC money was very, very easy. Startup used to get money. It's becoming difficult, and we call it funding winter. So in India also it is funding winter for startups. So the move is from the easy VC money to smart VC money. So which kind of entrepreneur you think would attract you? What's your assessment criteria? What do you see? Because it's no more very easy. Every startup would not get the funding. They'll not be funded. You'll be very choosy. We have soon seen you and other sharks on television and other places. So how do you assess, and what are the criteria so that while guiding their clients, they can say that you have to develop these core values, this kind of product, so that you can attract the investors, otherwise this is waste. So can you give your style of appraisal, a piece of advice on your style of appraisal to all of them, so that they also can appraise their clients, everyone can do that, and perhaps then can advise that, yes, this startup is fit for going further, don't waste time, you are not fit, you are fit. So just explain your criteria. देखो इस शार्क टैंक में जो आप लोग देखते हो 10 मिनट में आपको लगता है कि हम लोग 3 क्वेश्चन पूछ के इन्वेस्ट कर देते हैं, रियल में पिच चलती है 1.5 घंटा पहली बात। तो मेरे को कई लोगों ने पूछा यार 10 मिनट में कैसे इन्वेस्ट कर देते हो, रियल में 10 मिनट में नहीं होता, वो 1.5 घंटे चलती है। उसको एडिट करके आप लोगों को 8-10 मिनट का दिखाते हैं, और उसके अंदर बहुत डिटेल में सवालात होते हैं टू अंडरस्टैंड। आप अपना खुद का पैसा डालते हो, जो अपना पर्सनल पैसा डाल रहे हो तो इन्वेस्टमेंट में। शो में दिखाने के लिए जो होता है वो 10 मिनट का होता है, बाकी आप असेसमेंट में 1.5 घंटा लेते हो। हाँ, रफली 1.5 घंटा लगता है उसके अंदर। पर आप क्या जज करते हो वो कॉमन ही होता है। मतलब मेरा दिमाग में हमेशा ये रहता है कि पहले इतनी अर्ली स्टेज आते हैं तो आप लोग को ना सबका एक थान से सारे कपड़े नहीं कटते जाते हैं ना, तो आपको सोचना पड़ेगा शार्क टैंक में जो आए हैं स्टार्टअप बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं, मतलब जहाँ पर बिल्कुल धंधा चालू ही हुआ है। आपके हो सकता है क्लाइंट डिफरेंट स्टेज में हो, तो आप लोग सबको एक साथ थान से मत काटना। तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी शार्क टैंक के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, लेट स्टेज विंटर जो आप बोल रहे हो फंडिंग, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं अलग से डिस्कस करता हूँ। बट शार्क टैंक टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं वो बंदे पे होते हैं, क्योंकि जो बंदा आया है पहले बंदा फिर धंधा, में मेरा असूल ये है। तो आप पहले बंदे को देखो, फाइटर लग रहा है, रेजिलेंट लग रहा है, वैल्यू सिस्टम ठीक लग रहा है, हार्ड वर्किंग लग रहा है, इंटीग्रिटी लेवल्स हाई लग रहे हैं।
उसके बाद उसमें कोई ऐसी स्किल है जो स्पार्की है, मतलब विच मीन्स कि या तो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, या इंस्टाग्राम में बिना पैसा खर्च करे फॉलोअर डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक कर लिए है, या फिर कोई रिटेल ऑफलाइन मॉडल में ज़बरदस्त 50,000 रिटेल शॉप बना ली है, मतलब सम स्पार्क इज़ देयर। फिर वो जो स्पार्क होता है आप नंबर्स में देखते हो यूनिट इकोनॉमिक्स में कि यार ये जो बोल रहा है कि मेरी जो सुपर पावर है क्या वो मेरे को नंबर्स में दिख रही है, जब आई एम एबल टू मैच हिज सुपर पावर इनटू नंबर्स, मेरे को पता है जो बोल रहा हूँ यहाँ दिख भी रहा है। उसके बाद आप देखते हो टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है, कि भाई अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है, जहाँ ये खेल रहा है वहाँ कितना कंपटीशन है, वाइट स्पेस क्या है, यानी कि इसने जहाँ अटैक मारा है क्या वहाँ पर 100 लोग ऑलरेडी तो नहीं बैठे एस्टैब्लिश्ड, कोई नया इनोवेशन लाया है, यूनिकनेस है जिसकी वजह से इसकी जीतने के हाई चांस, राइट टू विन कितना है। तो आप ये सारी चीज़ें एसेस करते हो बहुत फटाफट 1.5 घंटे के अंदर और आप डालते हो पैसा। रियलिटी के अंदर सारे सक्सेसफुल नहीं भी होंगे, बट मेरा व्यू ये है कि आप उस टाइम पे आप अपने बंदे पे पैसा लगाओ उस स्टेज में। अब आते हैं लेट स्टेज, जो आप बात करो विंटर फंडिंग, वो फैक्ट चल रही है और मेरे ख्याल से संजय ने भी जैसा बताया मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न जितने सारे बने हैं काफ़ी ओवरली वैल्यूड है, काफ़ी सारा लॉस भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनको फंडिंग मिलना बंद होगी एट सम पॉइंट, क्योंकि एवरी इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर फाइंड अ प्रॉफिट पूल। एंड गुड पार्ट इज कि सडनली दिस करेक्शन हैज हैपेंड, so it is forcing everybody in the startup ecosystem to focus on profitability now. तो सैनिटी तो कभी ना कभी आनी होती, कोई ऐसा मैंने कभी नहीं देखा धंधा जहाँ पर प्रॉफिट कभी पूछा ही नहीं जाएगा, तो पूछा तो जाना ही है। तो हम लोग जैसे हम लोगों ने 4 बिजनेस बनाए हैं, हमारे 3 बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं हेविली, एक बिजनेस है जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज हाउ साइकिल्स वर्क, बट मेनी स्टार्टअप्स आर देयर इन द कंट्री जहाँ पर आपका यूनिट इकोनॉमिक्स में एक ट्रांजैक्शन ही पैसा खा रही है आज तक एट स्केल ऑल्सो। तो आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट और रेंटल और मैन पावर कॉपरेट ही कवर नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि ट्रांजैक्शन और जितना स्केल करोगे उतना बर्न बढ़ेगा। तो अगर आप इस तरीके का स्टार्टअप बना के बैठो तो यू शुड बी वेरी वरिड कि इस पे फंडिंग नहीं आने वाली है। अभी आ गया विंटर, राइट मॉडल पे मिलेगी फंडिंग। बड़ा दूसरा पर्सपेक्टिव पूछ रहा हूँ, एक तो मैंने पूछा कि हमारे लोगों के जो क्लाइंट्स हैं उनको हम एडवाइस करें तो उसमें से कैसे किसको ये देखें कि इसको फंडिंग मिल सकती है, उसको नर्चर करें, बाद में उसको फंडिंग मिले। मैं एक दूसरा नज़रिए से बोलता हूँ, ये सब लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं। हाँ जी, जब ये इन्वेस्ट करें तो इन लोगों को क्या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, राइट जगह पे करना चाहिए। आपको आप तो सीईओ सारे, आपको नंबर्स देखने आते हैं। आप सिंपल तो ये देखो कि जो ट्रांजैक्शन है अगर वो पैसा बना के दे रही है नीचे, तो एट स्केल वो बाकी सारे कॉस्ट कवर के प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अगर ट्रांजैक्शन ही पैसा बनाना नहीं सीखी अभी तक स्केल पे और आप पैसा डाल रहे हो वहाँ पर, तो बहुत मुश्किल होने वाला है आपको पैसा बनाना वापस। इट्स नॉट गोना बी ईजी। और इंडिया क्या है, ऐसी वैल्यू बेस्ड कंट्री है, यहाँ पर बिल्कुल तिल से तेल निकालना होता है। यहाँ पर कोई कन्वीनियंस के बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देता, रियलिटी है। तो आप लोगों को ऐसा समझना पड़ेगा कि ये कन्वीनियंस के नाम पे हम जो सपना बेच रहे हैं एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा, बहुत मुश्किल होना। इंडिया हमेशा वैल्यू बेस्ड कंट्री रही है और आगे भी रहने वाली है मेरे व्यू में। जो नया कोर्ट आया ये जो जैसे हमारे बच्चे जो हैं शायद वो इतना ना सोचे खर्च करने पहले, बट जो अभी करंट जो मार्केट है उसके अंदर हर कोई वैल्यू से देखता है। तो मेरा व्यू ये है कि इस टाइम से जब आगे जाएंगे हम लोग 5 से 10 साल, इस टाइम पे वो कुछ स्टार्ट को यूनिकॉर्न्स दिखते हैं, काफ़ी तरह तो गायब भी हो जाएंगे, यूनिकॉर्न रहेंगे नहीं मेरे व्यू में, कुछ मर्ज हो जाएंगे। दैट इज व्हाट आई बिलीव। संजय, यू हैव बीन, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, आपका नंबर आ रहा है, चिंता मत करिए। नंबर की बात नहीं सर, आपसे जबरदस्ती बात करनी पड़ती है। अरे नहीं सर एक मैं आपको एक ही आपने वो पूछा ना कि किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पे एडवाइस थोड़ी अपने विचार। अरे सर एक बार सुनिए तो सही कि सर एक स्टार्टअप है जो 27 साल से बनी थी, बन के बड़ी भी हो गई है, पैसे भी कमा रही है, लिस्टेड भी है, तो आप इधर उधर देख क्यों रहे हो? आपको स्टार्टअप में डालना है, स्टार्टअप भी थी, आपको पैसे कमा रही है, पैसे भी कमा रही है, स्केलेबल भी है, बिजनेस मॉडल भी है, यूनिट भी है, जो ये बोलेगा सब है। और सर सुबह आओ शाम को जाओ, यहाँ इसके साथ जाओगे तो रह ही जाओगे 10 साल। अरे ये कोई आईपीओ कॉन्फ्रेंस थोड़ी हो रही है यार। सर बता, आपने पूछा कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अरे ये कस्टमर मीट नहीं है सर मैं आपसे देखिए सर, मैं यहाँ पे सीए की हैसियत से बैठा हुआ हूँ, तो मैंने ये खाली एडवाइस देना चाहता हूँ कि स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जयपुर वाली को ही करना चाहिए। कल मेरे को लगता है एयू बैंक का शेयर प्राइस चढ़ जाएगा 10%। वो तो मुझे पता है कि कब बढ़ता है। Sanjay, my serious question to you. Sorry. He mentioned that he gives an investor's perspective. How does he evaluate the proposals of businesses for investing? You have been a lender, as you mentioned that I have been doing lending. That's my passion. That's my quality. That's my USP. So when you are lending a person,
are the criteria different than what he mentioned, or they are same, or what are different, what are same? When you see a startup from the point of view of lending or investing, is the criteria different or same? सर खाली 8% कमाते हैं तो तो सिक्योरिटी ज्यादा रिस्क है ही नहीं, रिस्क लेने की कैपेसिटी होती नहीं है बैंकों में। वो रिस्क लेते हैं, तो आप नहीं रिस्क लेते। हम, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत बढ़ के आते हैं बच्चे, मिलते हैं मुझसे आके कि सर हम तो स्टार्टअप बनाया, आप फंड करो। मैं कहा भैया हमारा पब्लिक मनी है, Right. we are custodian of public that's money, that's the different so we don't have money which can be put on risk. Right. So don't expect a banker to do your risk financing. He will not do it. Right. चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, because we are supposed तो to स्टार्टअप को बैंक के पास तो जाना ही नहीं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला स्टार्टअप को, मैं रिस्क कैपिटल हम फाइनेंस नहीं कर सकते। लाइक मैंने स्टार्टअप का मन से कि I am putting a 10 crore in a capital and I need 2 crores from you, तो मैं करूंगा उसको फंड। मुझे पता है इसका रनवे क्या है, ये कब तक बर्न करेगा, मेरा पहले खत्म हो जाना चाहिए। सो देयर इज अ वे टू डू इट, बट समबडी से कि मैं तो 1 करोड़ पे लगाया हूँ, आप मुझे 3 करोड़ दे दो, तो वे कहाँ से दे दें भाई? और मैं गारंटी भी साइन नहीं करूंगा, मैं घर भी नहीं दूंगा, तो आई एम नॉट अ पार्टनर इन योर बिजनेस ना। अभी शेयर वाली बात आई तो सब लोगों का इन्वेस्ट करो, कस्टमर वाली बात आई तो मेरे में खाता खोलो, लोन वाली बात आई तो भाई उधर जाओ। हाँ ना, ये तो लोन देता ही नहीं है ना। मैं व्हाट आई वांट टू से सर कि स्टार्टअप में, अरे बात तो करने दे, तो तुम्हारे इंजीनियर्स में ना ये बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, पेशेंस ही नहीं होता है यार। तो सर ये सर ऐसे करता है तुम। लास्ट कॉन्फ्रेंस में ऐसे हुआ था। तो व्हाट हैपेंड कि सर बैंक्स आर नॉट, इन माय ओपिनियन, बैंक्स आर custodian of public money, right? And we need to give everybody's money back, right? So we can't put money on risk which is not even known to the borrower. मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें रिस्क पता है क्या, उनको खुद को नहीं पता होती। मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारे पास फिर कैसे लोगों को लोन लेना आना चाहिए, ब्याज की रेट ज़्यादा रखते हो क्योंकि ब्याज देते ज़्यादा हो, और स्टार्टअप को रिस्क वाले सर ये बता दिया तो बैंक खोलोगे ना आप? सर कुछ तो सीक्रेट रखोगे किस लोगों को, कौन सी तरह की कैटेगरी को फंड करते हैं? देखिए व्हाट हैपन कि जो स्टार्टअप है ना, कई मुझे लगता है ओवर यूज वर्ड है इंडिया में। इंडिया इज ऑलवेज रिमेन्ड अ सेल्फ एम्प्लॉयड काइंड ऑफ कंट्री, जहाँ बरसों से आपके पिताजी ने, दादाजी ने, इधर चाचा जी ने खुद ने अपना काम बनाया है, राइट? स्टार्टअप थोड़ा कल्चर्ड वर्ड आया 10-5 साल में कि भैया कोई इनोवेशन है, आपको फंडिंग चाहिए, वेंचर कैपिटल चाहिए, वैसे बनेंगे। पहले के ज़माने में तो लोग अपने फैमिली से पैसे लेके आते थे, मैंने भी तो ऐसे किया था सर। मैंने कौन से वेंचर कैपिटल से पैसा उठाया था? मैंने अपने फैमिली से उठाया, फ्रेंड्स से उठाया, गारंटी करी पर्सनली, एंड देन बिल्ड द बिजनेस, राइट? वो भी स्टार्टअप ही है। बट आज के स्टार्टअप में कल्चरली आपने बोला कि नहीं आप आओ, आपका दिमाग है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपका एक लिमिटेड रिस्क होगा, विल सपोर्ट यू, राइट? तो कल्चरली वो बदला, जब भी तो रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि मेरा पैसा ही नहीं लगा हुआ, मेरा तो दिमाग लगा हुआ है खाली। तो मुझे लगता है कि बिजनेसेस आज भी अच्छे बिजनेसेस बनते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, लोग अपना एक ट्रक खरीदता है आदमी, वो बोलता है कि यार मेरा 10 लाख का ट्रक है, मैं 3 लाख रुपये लगाता हूँ, तो अच्छा है ना, मेरी सिक्योरिटी ये ट्रक है। तो his margin money is also there, he know how to drive the truck, and he's putting his 3 lakh rupees, I am putting 7 lakh, in case he fails, I have access to his property, right? तो मैं वो फंडिंग करता हूँ, तो मैं करता हूँ स्टार्टअप फंडिंग रहा हूँ, पर वो डिफरेंट है। Right. इसमें रिस्क। अब एक दूसरी साइड का सवाल पूछता हूँ मैं। हाँ प्लीज। नहीं, एक सवाल मेरा इसी से कनेक्टेड है, एक मिनट के लिए मैं पूछता हूँ, उसका आंसर दीजिए। हमारे पास टाइम जितना है उतना ही है। अब कैसे लास्ट है? तो वो तो बैठना तो आपको है हिसाब करने के लिए, बाकी सबको तो घर जाना है। मैं तो पूरा उसमें करूंगा। ये स्पॉन्सर हैं, देखिए प्लीज इनको ढंग से वसूलने दीजिए। माय क्वेश्चन फ्रॉम द स्टार्टअप साइड, जैसा आप लोगों ने कहा, कौन से केस में उसको फंडिंग लेनी नहीं चाहिए या कब लेनी चाहिए? व्हाट इज द राइट स्टेज जब उसको इन्वेस्टर के पास जाना चाहिए, और कब तक उसको घर की पूंजी या आसपास में जो रिश्तेदार है, फ्रेंड सर्कल है, उससे काम चला के, व्हेन शुड ही गो टू ए काइंड ऑफ फॉर्मल इन्वेस्टर? सो देयर इज क्वेश्चन टू यू। देखो मेरा मानना ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि पहले भी तो होते थे स्टार्टअप, कोई आज ही थोड़ी हुआ है, और पहले आसपास में ले दे के, और
मैंने भी तो किया है या व्हाटएवर. सो कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, कौन सी स्टेज पर वो अपने आप को अंडर सेल कर देगा, कब अप्रोप्रिएट उसका वैल्यूएशन मिलेगा, वैल्यूएशन का सोच के जाना चाहिए, या पहले तो जिंदा रहने का सर्वाइवल की कोशिश में चले जाना चाहिए, जिंदा रहेगा तो आगे वैल्यूएशन मिलेगा. या कैन यू एडवाइज द स्टेजेस व्हेन वन शुड रियली अप्रोच ए फॉर्मल इन्वेस्टर? आपके सवाल मेरे जवाब से लंबे होते हैं. मेनली वो देखो रियलिटी है कि जो स्टार्टअप अगर आप बनाते हो तो आप जितना जल्दी जाओगे इस फंडिंग लेने आप उतनी इक्विटी डिल्यूट करोगे. तो जितना डिले कर सकते हो उतना बेटर अगर आपको अपने आइडिया में कन्विक्शन है. तो मेरा मानना है कि आप जितना टाइम तक अपने पैसों से चला सकते हो वो चलाना बेटर है. 1 नंबर 2, जब भी आप फंडिंग लेने जा रहे हो तो स्केल करने के लिए लेके जाओ कि आपने अपने सिटी में, अपने मोहल्ले में, अपने स्टेट में, कहीं पर भी एक छोटे लेवल पे आपने एक प्रॉफिटेबल मॉडल बना लिया है. अब आप बोल रहे हो यार ये तो क्रैक हो गया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ पूरे इंडिया में या पूरे ग्लोब में. तो उसके लिए फंडिंग चाहिए ताकि मैं फास्टर स्केल कर पाऊँ और मार्केट कैप्चर कर पाऊँ, लैंड ग्रैब कर पाऊँ. तो उसके लिए जो फंडिंग उठाते हैं नॉर्मली वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज अपोज टू जो सर्वाइवल के लिए उठाते हैं कि अब मेरा अगले मंथ कंपनी बंद हो जाएगी. जैसे हमका एक सिंपल सा रूल रहा है लाइफ में, हमारे कभी भी ऐसा नहीं हो कि 3 साल से कम का पैसा बैंक में हो. बर्न रेट मल्टीप्लाइड बाय 36 मंथ वो हमेशा रखते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि उस स्टेज में सबसे घटिया वैल्यूएशन में पैसा मिलेगा. जब आपकी एकदम लगी हुई होगी ना आपके पैसे खत्म हो रहे हैं, तो ना तो ये लोन देंगे ना इन्वेस्टर आपको टंकी वैल्यूएशन देगा. तो आपको उस टाइम में मार्केट में हिट ही नहीं करना चाहिए. ऑलवेज रेज एट योर पीक, नेवर रेज एट योर डाउनफॉल. ये सबसे घटिया वैल्यूएशन तभी मिलती है आपको, उसको अगले को भी पता है प्रेस्ड हो. और लेंडिंग जो बिजनेस है और जो स्टार्टअप बिजनेस थोड़े डिफरेंट है. स्टार्टअप में डिग्री ऑफ रिस्क लेना पड़ता है बहुत ज़्यादा और सारे सक्सेसफुल होते भी नहीं. संजय के केस में बैंक चलाता है वो, देयर इज नो चॉइस, ही कैन नॉट रिस्क पब्लिक मनी. तो हिज अप्रोच हैज़ टू बी कंजर्वेटिव इन लेंडिंग. स्टार्टअप के पास एक ही लाइफ है, अगर या तो बहुत बड़ा बनेगा या जीरो होएगा. तो एक ही मौका मिला तो ढंग से फाइट मारो और जितना है सब कुछ दांव पे लगा दो. दैट इज हाउ स्टार्टअप फाउंडर्स प्ले. कैन संजय प्ले लाइक दैट? ऑफ कोर्स नॉट. इट्स अ पब्लिक बैंक, पब्लिक मनी इज देयर, 1.5 का टोटल मार्जिन है, तो ही कांट प्ले लाइक दैट एंड ही शुड नॉट ऑल्सो इन माई व्यू. मैं हूँ तो स्टार्टअप ना. यार देख स्टार्टअप तेरा बहुत डिफरेंट टाइप का मानूंगा मैं. यहाँ पर लोग अपना घर बेच के स्टार्टअप करते हैं भाई. हाँ भाई तो स्टार्टअप तो कहना चाहते हैं ना, ठीक है. पर लेंडिंग बिजनेस इज फंडामेंटली अ वेरी डिफरेंट बिजनेस देन व्हाट वी डू टिपिकली. मैं नहीं दे रहा. ये क्या बात हुई यार? तू करे तो स्टार्टअप, हम करें तो अलग. So, my next question, Amit, to you once again. No, you. We have seen your recent portfolio, and you have been showing interest in ESG startups or ESG funding. How do you feel that market going? Do you consider this ESG investing to be a good opportunity, or is just a bubble? And in the name of ESG, there are many, kind of fake or maybe the ESGs which are not real ESGs, and they are, because it is a new buzzword, they are taking in the name of ESG funding. Easy money is available, ESG funds are available. So what one should take care while selecting ESG investing so that it doesn't prove to be new bubble, they don't just grow up on the unknown investors' money and one day the bubble bursts. So what would be your advice on ESG investing? मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पर सीए भाई बैठे हैं तो वो रियलिटी में ESG इज द नेक्स्ट बिग थिंग जहाँ पर आपको फोकस भी करना चाहिए. अगर एरिया ऑफ ग्रोथ आप देख रहे हो या न्यू अपॉर्चुनिटीज़, करीब करीब $1 ट्रिलियन का फंड ESG के पीछे ऑलरेडी डिप्लॉयड है और बढ़ते ही जा रहा है. और ESG के अंदर इट्स नॉट जस्ट अबाउट एनवायरनमेंट, इट्स अबाउट इंक्लूजन ऑल्सो, इट्स अबाउट जेंडर इंक्लूजन, ऑल काइंड ऑफ इंक्लूजन्स. तो मुझे लगता है अगर आप लोग को कुछ इंडिया में नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो ESG के अराउंड बहुत सारा रोल आप सब लोग का होने वाला है. अभी जैसे अगर आप स्टील देखोगे एक्सपोर्ट होती है तो जो एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से नहीं प्रोड्यूस हो उस पर पेनल्टी लगती है, तो उसकी रेट बढ़ गई. तो आपका बिजनेस ही कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा अगर आप ESG को फॉलो नहीं करोगे. तो इट्स नॉट अ चॉइस कि आपका चॉइस है अभी आप अच्छे कुछ फिलैंथ्रोपी के लिए करो, आपको मैंडेट हो गया. आपको डेवलप्ड कंट्रीज आप पे पेनल्टी लगा रहे हैं अगर आपने ग्रीन हाइड्रोजन से प्रोड्यूस नहीं किया. So this is not going to be just lip work. This will be mandated across. स्टील प्लांट में सब में अब ग्रीन हाइड्रोजन के वो लग रहे हैं, राइट? क्यों लग रहे हैं? उनका तो खर्चा बढ़ रहा है, वो इसलिए लगा रहे हैं कि वो सारे धंधे वाले हैं, उनको पता है कि अगर नहीं लगाया तो
तो वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहेंगे। तो आपको पूरा ग्लोब जो डेवलप्ड मार्केट है वो बोलेगा भाई आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको मेरे साथ काम करना है, तो वरना आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे। तो आप सब लोग का काम बहुत बढ़ने वाला है इसके अंदर। ये नया जो डोमेन आया है इसमें डेफिनेटली बहुत एरिया है, बहुत स्कोप है, और यहाँ पर इसकी नॉलेज भी बहुत कम लोगों के। अगर आप अर्ली मूवर एडवांटेज ले लेते हो, अच्छी फर्म्स बना लेते हो इसके अराउंड, तो यू विल हैव अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। आई वेंट आउट टू फाइंड आउट कि भाई किस किस को इंडिया में आता है, कि हमें हायर करना था। तो वी गॉट अ इन्वेस्टर हु वाज ESG इन्वेस्टर। तो हमारे को पूरा उसका कंप्लायंस, ऑडिट और इसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ करने, चार्टर क्या लेने, बनाने पड़े। बट देयर वर वेरी फ्यू फर्म्स इन इंडिया वी कुड फाइंड जिनको पता भी है। 2-3 मिली उन्होंने बोला कि हमें आता है, एक्चुअली डेप्थ लेवल पे किसी को नहीं आता है, इंडिया में बहुत कम लोगों को आता है। तो आई थिंक दिस इज अ न्यू एरिया ऑफ इमर्जिंग विच इज अ वेरी रेलेवेंट एरिया फॉर एवरीबडी सिटिंग हियर, which I would say completely recommended to focus on. At Cardeco, we have taken up a charter to be carbon neutral. My whole family, we bought carbon credits to make carbon neutral, our whole family personally. And company already has laid out a charter to be carbon neutral by 2050. तो हम लोग already कर रहे हैं उस पे काम, choice नहीं है। Right. Yeah, and I heard that you are doing some work on ESG and you are investing in ESG. Yes. संजय, MSME पर गवर्नमेंट का अभी MSME क्रेडिट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस है. What kind of I think infrastructure you can very well explain that, because most of our clients are MSME. If we check the portfolio of a mid-size CA firm, you'll find 70% are, or maybe more than that, 70%, more 80% maybe MSME clients. So what is the credit infrastructure for? Union ministers have been talking about this, that they'll promote MSMEs so that these big giants like Amazon, they do not take away the entire market of MSME, so that they should be fueled through credit. So what do you think that MSMEs, they have the proper credit platform, infra, banks would prefer them, or it is their market next 10 years, they will flourish through funding. They are of course investing in startups, but when it comes to MSME, they are little established ones, but in kind of middle-age crisis in the businesses. They don't know whether to grow or to remain at that level, or to close down, go into new one. So these kind of businesses on credit side, what you would advise? No, I think, sir, my personal view is this, that if India has to grow next maybe decade or maybe next 20-30 years, then MSME will play a very important role, because that's the way India wants to manufacture. That's the way India wants to provide services. And for a data point, as per the data of MSME government, everybody would be knowing that India has around 6.25 crore के आसपास की MSMEs हैं जो registered मतलब हैं, but MSME जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने 2 साल पहले उनको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन देना चालू किया सर, एंड आई वुड से दैट वाज द बिगेस्ट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट कि, और उसमें शायद 10,000 बिजनेसेस हैं, उस ऑनलाइन है वो। ओके। तो उन्होंने ये बोला कि हर MSME को उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और ऑनलाइन जाके रजिस्टर करवाइए, और यदि आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो ये आप प्राइवेट सेक्टर लोगे। ओके। तो एज ए बैंक हमको स्टिच किया, और इतना प्रोग्रेसिव डिपार्टमेंट है MSME का कि पिछले 2 सालों में, इवन इन कोविड डेज, अच्छे से याद है मुझे, 20 जुलाई 2020 को चालू हुआ था वो पोर्टल, अभी करीब हो गए, तो उसमें अभी 125 करोड़ MSME रजिस्टर्ड हो गई हैं। ओके। तो जो 125 करोड़ MSME रजिस्टर्ड हैं, आप उनको फाइनेंस करते हैं तो ही प्राइवेट सेक्टर में माना जाता है। और प्राइवेट सेक्टर रिक्वायरमेंट इज सो ह्यूज फॉर एनी बैंक, और हमारे ऐसे बैंक को तो 75% करनी है। अच्छा, इतना MSME को करना पड़ता है? 75% प्राइवेट सेक्टर है, उसमें अलग अलग सेक्टर है, बट MSME इज द बिगेस्ट वन, वी डू अराउंड 40%। ओके। एंड उसमें माइक्रो भी है, उसमें मीडियम भी है, उसमें और स्मॉल लेवल भी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको फॉर्मुलाइज करने के लिए बहुत अच्छा काम किया। और मुझे लगता है सेकंड जो सबसे बड़ा चेंज आया MSME की लाइफ में वो हुआ GST। मैंने देखा है कि पिछले, जब हम देखते हैं बैलेंस शीट, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, तो 2015 की बैलेंस शीट में 10 करोड़ का टर्नओवर, 2016 की बैलेंस शीट में 15 करोड़ का टर्नओवर, 2017 की बैलेंस शीट में 30 करोड़ का टर्नओवर, 2020 की बैलेंस शीट में 100 करोड़, 2022 में 200 करोड़। तो सडनली इतना फॉर्मलाइजेशन हो गया, और यही आप लोगों की चॉइस, यही जितने भी CA बैठे हैं यहाँ पे, यही आपकी शायद स्कोप ऑफ वर्क है कि आप MSME कोई बैलेंस शीट मैनेजमेंट नहीं आता है, वो क्यों 10 करोड़ करता था, क्यों 200 करोड़ कर रहा है वो तो आपको पता ही है, बट अब 200 करोड़ की बैलेंस शीट है, लिवरेज ही नहीं बैलेंस शीट। हमारा बिजनेस बैंकिंग, एग्री बैंकिंग 200% से ग्रो हो रहा है हर साल,
इतने एमएसएमईज बिजनेस वाले अपने क्रेडिट कैश क्रेडिट के लिए आ रहे हैं, बैंक गारंटीज के लिए आ रहे हैं, चीज़ों के लिए आ रहे हैं। पहला वो रजिस्टर्ड हो गए एमएसएमई के अंदर, दूसरा उनके पास फॉर्मल डॉक्यूमेंट आ गया, तीसरा कि गवर्नमेंट की सारी स्कीम, चाहे वो क्रेडिट गारंटी स्कीम हो, चाहे वो नाबार्ड की स्कीम हो, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो सिडबी से स्कीम आ रही है, इतना पैसा चेज कर रहा है फॉर्मली। मतलब बैंक्स लाइक अस, हम तो बहुत छोटे बैंक हैं सामने, जितने बैंक हैं सबने अपने लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए हैं एमएसएमई के, और रियल काम हो रहा है। देखिए बहुत लोग बोलते हैं एमएसएमई को पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि एमएसएमई के पास बैलेंस शीट है, एमएसएमई के पास अगेन वो स्टार्टअप तो नहीं है जो अमित बोल रहा है, राइट। सो यदि आप वो स्टार्टअप की बात करोगे तो हम नहीं करेंगे पैसा। आपका कैपिटल है, आपका बिजनेस मॉडल वाइबल है, आप अपनी पर्सनल गारंटी एमएसएमई को बिना सिक्योरिटी के मिलता है पैसा? मुद्रा में मिलता है ना आपको, मुद्रा में मिलता है, हम भी देते हैं। आप सीजीएमटीसी में आइए, देंगे पैसा हम आपको, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल सही है। बिजनेस मॉडल, टर्नओवर, कैश क्रेडिट गारंटी में भी क्या बोलते हैं बैंकों को कि जितना प्रीमियम आपने चुकाया है उससे डबल का क्लेम नहीं ले सकता बैंक। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे रिस्क पूरी सरकार बियर कर रही है, वो बोल रहे हैं कि आप सोच समझ के लोन दे रहे हो, उसमें कोई नुकसान आता है तब हम बियर कर सकते हैं। लेकिन ये बैंकर की ड्यूटी है ना कि जब देते वक्त वो पूरी ड्यू डिलिजेंस करे। तो मुझे देखना पड़ता है कि भाई आपका बिजनेस मॉडल सही है क्या, आपके पास कैपिटल है क्या, आपकी इंटेंशन क्या है, आप चुका पाओगे नहीं चुका पाओगे। आज तो मुझे पता चले, हो सकता है भविष्य में कोई बिजनेस मॉडल में गड़बड़ हो गई तो ठीक है, उसी के लिए तो 2% है भाई, इसलिए नहीं देखिए। तो मेरा पॉइंट है कि एमएसएमई पे जितना फोकस पिछले 2-3 साल में मैंने देखा है, एंड एज ए बैंकर आई कैन से यू कि वहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सारे सीए फर्म्स के लिए, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि उनको रिस्क समझ में नहीं आती है, उनको बैलेंस शीट मैनेजमेंट करना नहीं आता है, क्या लिवरेज लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, यू नो। मेरे बहुत क्लोज दोस्त भी हैं। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसमें हेल्प कर सकते हैं उनको? और पूरा करना चाहिए सर। मुझे लगता है कि अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको 10 साल का व्यू लेना पड़ेगा। देखिए सर, जल्दी कुछ नहीं होने वाला, जल्दी कुछ नहीं होने वाला, ना आपकी ब्रांड बनेगी ना आपकी क्रेडिट बनेगी। आपको 20 साल का एजेंडा सामने रखना चाहिए। मेरे हिसाब से जो आपने एक सवाल मुझसे नहीं पूछा, जब जवाब मुझे देना चाहिए था उसका, कि जो सीए के पास अपॉर्चुनिटी है दिस कंट्री में, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं सर। आपको सब आता है, आपको बैलेंस शीट समझ में आती है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आता है, आपको फंडिंग रेज करवाना आता है, आपको सही बात करनी आती है, आपको कम्युनिकेशन आता है। फंडिंग रेज की बात कर रहे हो यार, फंडिंग आजकल जरूरत पड़ती है सीए की। मतलब देखिए सर, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम, क्योंकि बैंकर और क्लाइंट तो सीधे ही मिल लेते हैं आजकल। नहीं सर, देखिए देखो हमारे जो बच्चे वो तो बोलते हैं कि फाइल सीए के पास चलेगी तो केस तो होगा ही नहीं। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो एक छोटा ट्रांजिशन की बात मत करिए आप, लेकिन बैलेंस शीट को बनाना, बैलेंस शीट को, लेकिन देखिए सर मैं फिर बात कर रहा हूँ ट्रस्ट की। आप क्वालिटी काम करेंगे ना तो ही फायदा होने वाला है। अब मैनेजमेंट करेंगे और सीए ही एमडी होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात। हाँ तो बात, हाँ तो आप समझ में आ गई पूरी। आप प्रोग्रेसिव काम करिए। इतनी सारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो रहा है, इतना लिंकेजेस बन रहे हैं, मतलब ह्यूज है। मतलब इंडिया में जो अभी पिछले 2-3 सालों में काम हुआ पोस्ट। So MSME has a bright future according to you. Amazing. They will get पैसे की कमी नहीं है सर, पैसे की कमी नहीं है। Through banking channel, credit infrastructure is well developing. एक ही बात ध्यान रखनी है सर, we are not here to fund your risk, we are here to fund your growth. That's right. So MSME should, that is very important. So Amit is here to fund your risk and Sanjay is here to fund your growth. लेकिन इसकी रिस्क नहीं करूँगा, ये टू रिस्की है। हमारे केस में क्या है, ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड ही बहुत हाई होती है। हम लोग ग्रो करते हैं 100% से हर साल, तो रियलिटी में उसमें रिस्क रहता है जब 100% ग्रो करते हो, राइट। तो अगर आप बैंक की तरह हिंदी में बोलते हैं ग्रीड, जो भी कह सकते हो आप, जो भी कह सकते हो, मल्टी बैगर, जो भी कह सकते हो आप, बट रियलिटी की कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है हर स्टार्टअप में, व्हिच बेसिकली कीप्स ऑन कंपाउंडिंग। सारे अच्छे वर्ड हैं ये। हाँ ये वो तो तभी तो पैसा उठाया इतना भाई। एक चीज आप बताओ, बड़ा जनरल क्वेश्चन है लेकिन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया की बिजनेस रेटिंग काफ़ी इंप्रूव हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है। आपसे अलग पूछ रहा हूँ, दोनों को दो चीज़ ऐसी बतानी है। आपको लगता है कि अगले 2 सालों में ये 2 चीज़ अगर और इंप्रूव हो जाए तो इंडिया की रैंकिंग 10 पॉइंट ऊपर आ जाएगी। सो ऐसी कौन सी 2 चीज़ें आपको लगता है, एंड वेयर गवर्नमेंट कैन प्ले ए रोल, वी कैन प्ले ए रोल, और एनीवन कैन प्ले ए रोल, उन 2 चीज़ों में इंडिया की रैंकिंग जो अभी 63 नंबर पर आ गई है, 142 थी 2014 में और अब 63 पर आ गई है। एंड दिस क्वेश्चन वुड बी टू यू आल्सो व्हेन यू लुक इंडिया फ्रॉम आउटसाइड। सो
कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो इम्प्रूव अगर इंडिया करे अगले 2 सालों में बिजनेस साइड में, बिजनेस प्लेटफॉर्म में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, गवर्नमेंट में, रेगुलेशन में, जो भी आपको जिधर लगता है जिससे रैंकिंग 10 पॉइंट जंप हो सकती है या और फर्स्ट 50 में इंडिया आ सकता है, बिकॉज दैट विल बी अ ग्रेट, देन इंडिया वुड बी अ प्लेस टू वर्क. So people would like to migrate to India, people would like to do business in India, and so what's, because now these days ease of doing business के साथ में ease of living भी की बात भी हो रही है. So आप 2 फैक्टर ऐसे कोई बताएं, starting with you. सर पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी कि क्या अच्छी बात है इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज. Developed countries are actually facing a lot of problem with cost of living, and they have scarcity of easy availability of skilled resources, जो इंडिया में easily available है. India में what is lacking, to point what esteemed guests have just put forward, is infrastructure. Right. And there has to be a lot of planning and in advance in how do we get the infrastructure and sustain it. Because it is again not just about entering into the market but actually sustaining and maintaining that value growth. But at the same time कि हम जो risks expose होते हैं, जो हमें opportunities मिलती हैं which are associated with the changes, how are we managing that? These are the 2 things that will actually help us grow in the ever changing environment. Because चीज़ें आती रहेंगी, टेक्नोलॉजी आएगी, एडवांसमेंट आएंगी, सब चीज़ें होती रहेंगी, रेगुलेटरी चेंजेस आएंगे, सब होंगे. It is about how do you sustain that and then manage and meet those risks. Right. That is more important. Right. Yes, Amit. आई थिंक गवर्नमेंट प्रोबेबली बहुत ही प्रोग्रेसिव है हमारी. जैसे आरबीआई ने जो किया है इंडस्ट्री में, आई थिंक दैट्स रिमार्केबल. जीएसटी लाए, पेमेंट का सारा क्या digital और किया. होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, My उस पे आ रहा question is हूँ. this. ये जो आरबीआई ने किया ना, हर इंडस्ट्री को जरूरत है. इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस के अंदर अब चालू हो रहा है सेम काम, ये रेवोल्यूशन, इसके अंदर आपका पूरा डिजिटाइज हो रहा है. जितना हम डिजिटल बना दोगे ना चीज़ों को हर सेक्टर में, आप देखोगे आप लाइसेंस बनाने जाते थे, पासपोर्ट बनाने जाते थे, और डिजिटल हो गया है. तो आई थिंक व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग अक्रॉस इंडिया इज डिजिटाइजेशन ऑफ एवरी सिंगल डिपार्टमेंट. दैट मेक्स ईज ऑफ बिजनेस, दैट मेक्स ईज ऑफ लिविंग बोथ. आपको हर जगह आपको डिजिटाइजेशन दिखेगा. अब आपके चालान कटते हैं, आपके कोर्ट केस होते हैं. कोविड में तो वो भी चालू हो गया आपके ओवर जूम. रियलिटी के अंदर दिस इज न्यू इंडिया एंड दैट इज व्हाट्स गोना चेंज. एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन दैट पाथ एंड वी जस्ट नीड टू एक्सपीड ऑन दैट पाथ. जितना फास्ट जाएंगे इस डिजिटाइजेशन पे उतना ईजी रहेगा. सेकेंडली जो सेंट्रल लॉज हैं, कुछ स्टेट लॉज हैं, इनको जितना हम लोग ईजी कर देंगे, मर्ज कर देंगे, सिंगल विंडो कर देंगे, दैट विल बी ईजियर फॉर बिजनेस इन माई व्यू. एंड दैट्स प्रोबेबली हैपनिंग ऑलरेडी इन मेनी इंस्टेंसेस. अभी आपका जैसे हम लोग अपना एग्जाम्पल लें तो रजिस्ट्रेशन होती है. अब भारत की सीरीज आ रही है BH. वही स्टेट वाले जो नंबर्स हैं ये मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हट के भारत की सीरीज बन जाएगी. व्हाट आई एम सेइंग इज कि एवरीथिंग इज फाइनली गॉन मूविंग देयर. अब यूज कर हम बेचते खरीदते, वो ट्रांसफर ही नहीं होती 2-2 महीने, RTO के चक्कर काटो. जब वो डिजिटाइज हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा. तो मैं कह रहा हूँ ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अब कोई सा भी फील्ड उठा लो, उसमें ये स्कोप अवेलेबल है टू डिजिटाइज. एंड इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट इन मेनी एस्पेक्ट्स वी आर फार अहेड. लाइक व्हाट RBI has done, I do not think there is any other country even close in terms of digital payments on what India has done. Okay. That needs to happen. Great. Yes, Sanjay. So, sir, my view on ease of business, again is a journey which the country has taken in last maybe 20-25 years. So I'm very happy the way we have progressed in last so many years. So again, I should have more patience to see this कि यार change हो रहा है. But one thing which comes very naturally to everybody is this: how our tax reforms are, because we you consider to be that important that you have to name 2 and you are pointing out tax reforms. Yes, to be that I important. strongly believe that every business guy, whether he's working in India or somebody is investing outside, you should have very clear roadmap on tax reforms. मुझे लगता है हम बात कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी चीज़ों पे बात करते हैं, but like GST अभी आया है, तो it is creating more challenge than a solution, right? So मुझे लगता है इंडिया में we need to be very aware about this thing कि anything you want to bring new, it should not shackle the whole base also. तो जैसे आपने पुराना रिफॉर्म खत्म किया, पुराना टैक्स खत्म किया, बट वेदर GST इज सर्विंग दैट पर्पस हो सकता करे. बट इस जर्नी के अंदर आई नो इट्स जर्नी राइट कि 10-20 साल बाद अच्छा लगेगा, बट उस जर्नी के अंदर काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं. तो वो बिजनेस तो होता ही इतना डेलिकेट है, 1-2 साल का ही बिजनेस होता है सर. 2 साल आपको लॉस आ गया तो आप फिर वापस खड़े नहीं हो पाते हो. तो मुझे लगता है टैक्स इज वन थिंग वेयर
The government should be very, very open and they should talk to stakeholders. They should have patience enough कि यार कुछ लेके आएंगे लेकिन consultation से होना चाहिए. That's one thing. And second, I think we need to build more workforce, you know, because हम बोल तो रहे हैं कि इंडिया में population है, consumer है, but अभी भी 70-80 करोड़ लोग गरीब हैं, right? So मुझे लगता है यदि हमने उनको train किया यार उनको आपने main line में लेके आए, तब आपकी ease of business और बनने वाला है, you know. So for me these two things. Very good. So they will become consumers. Yeah, consumer बनेंगे सर और काम करेंगे काम ना, करेंगे. तो availability हो जाएगा. वो skilled So you जो वो cannot- बात कर रही हैं, skilled force. You cannot beat China unless until you have the workforce which can skilled. You can't beat China. You have named China. So how do you see China as contemporary or competitor to India in Sir, terms बहुत of आगे हैं business सर. after 5 years? बहुत आगे हैं सर. Maybe after 5 years. No, बहुत आगे. अरे बहुत आगे. 30 लेकिन years? सर बात ये नहीं कि वो आगे हैं हम पीछे हैं, वो बात नहीं है. हम सही path पे हैं क्या? The answer is right. So what's your answer? My answer is we are on right path. Okay. But we need to see what are the Will surpass China someday in terms of business? सर किसी को पास करना और नहीं करना अपना मकसद क्यों है? अपन कैसे चल रहे हैं? अपनी स्पीड क्या है? बिकॉज देखिए सर हर सोसाइटी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है. जैसे मुझे लगता है इंडिया इज वेरी डिफरेंट. जैसे इन्होंने बोला तो मुझे यदि आप मुझसे पूछेंगे इंडिया में लिविंग कैसी है तो मैं बोलूंगा इंडिया शुड बी टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Yes. इन टॉप 10 में होंगे इंडिया में. आपकी लिविंग इतनी कंफर्ट है, राइट? आपके यहाँ तो मेड्स ही नहीं मिलती है. ऐसा 4 बजे बाद ऑस्ट्रेलिया में खाना नहीं मिलता है. हाँ, खाना नहीं मिलता है. तो मतलब ऐसे ही होता है, राइट? तो मुझे लगता है कि लिविंग तो इंडिया में जितनी अच्छी होती है ही नहीं कहीं. बिकॉज बीइंग इंडियन बोल रहा हूँ मैं आपको. बट वर्किंग वाइज भी बनेंगे धीरे धीरे, जर्नी है. लेकिन हमको लगता है कि सारे स्टेक होल्डर है ना सर, सारे स्टेक होल्डर, जैसे गवर्नमेंट है, रेगुलेटिंग एजेंसीज हैं, टैक्स कलेक्शन एजेंसीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेदर दे कम ऑन अ सेम टेबल एंड डिस्कस कि ये करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ये होगा, ये करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ये होगा, ये करेंगे तो इसका इम्पैक्ट ये होगा. बिकॉज कई बार डिसीजन हो जाते हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, राइट? एंड वो कोई जगह बात करने की नहीं मिलती है आपको. तो मुझे लगता है यदि मैं उसीलिए बोला आपको टैक्स रिफॉर्म्स एंड ऑल दोस थिंग्स. So now organizers have indicated me that you can ask only one more question and therefore I'll ask a long question again and you all have to answer that. सर 1 घंटा तो आपने लिया है. तो एक आप तो आधे घंटे में आए. नहीं एक क्वेश्चन है and I think that is relevant and before that I cannot close. अगले सेशन में आप बैठना, हम पूछेंगे. Very good. So I would love फिर that. पता चलेगा 1 घंटा क्या होता है, 30 मिनट क्या होता है. So my question is, so I was sitting with one of the deputy governors of RBI and he was explaining how the small banks are doing and what we are expecting from the banks now and what are the new generation banks and what facilities which the old banks cannot provide and we are expecting that they come up with more value added facility. So उन्होंने मुझे कई सारी चीज़ें बताई और कुछ सारी मेरे दिमाग में थी, तो मैंने ये समझ में आया कि ये GST 2-3 साल में जब बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और आपका बहुत सारी फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी चीज़ें, तो इनफैक्ट उन्होंने जैसे एक एग्जांपल दिया कि हम तो ये कह रहे हैं कि बैंक्स के पास में सारी डिटेल्स हैं, तो बैंक्स बुक्स और बैलेंस शीट बना के क्लाइंट्स को भेजा करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स रिटर्न भेजेगा, GST डिपार्टमेंट GST की रिटर्न भेजेगा, क्लाइंट को केवल ओके करना है अगर वो करेक्ट है तो. तो उन्होंने एक नई चीज़ बताई कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट तो बैंक्स की ड्यूटी होगी, अकाउंटिंग वो करेंगे क्योंकि उनको डेबिट का पता है, वो उठाई जा सकती है ब्लॉकचेन से, बिल्स कितने बने GST पोर्टल से, उससे पेमेंट लिंक हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग निकल सकती है. तो फिर हम सबका क्या होगा? मैं भी सोच रहा था कि ये सीए कॉन्फ्रेंस में एक सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ. बैंकिंग में पूछते तो मजा भी आता. मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये कि बैलेंस शीट ही बना के दे देगा, अब ऑडिट का तो शायद जरूरत रहे नहीं रहे, ब्लॉकचेन और सब चीज़ें अपने आप में ऑथेंटिकेट हो जाएगी, तो ऑडिट कितना रिलेवेंट रहेगा नहीं मालूम. एक वो अभी GST की बात कर रहे थे कि GST का एक ऑडिट ही हटा दिया, तो अकाउंटिंग करना नहीं सीए को, ऑडिट करना नहीं, रिटर्न भरनी नहीं, और रिटर्न तो बन के आएगी. अब तो GST डिपार्टमेंट कह रहा है हम इनवॉइस सिस्टम ऐसा करेंगे जो हमारे पोर्टल में इनवॉइस बनाएगा तो GST रिटर्न की जरूरत ही नहीं है, रियल टाइम हमारे पास इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन आएगी. और उधर हम एक इनकम टैक्स वाला सेशन देख रहे थे, उसमें कह रहे थे फेसलेस में ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, सारी चीज़ें ही ऑटोमेटिक हो जाएगी.
प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आप कह रहे हैं कि हम तो सीधे उससे क्लाइंट से ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे, सीए की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट खुद ही देख लेते हैं हम तो अगले 10-20 सालों का हमको भी तो प्लान बनाना है। आप कह रहे हो बिजनेस को बनाना है, हमको भी हमारे ऑफिसेस का हमको कितनी बड़ी बिल्डिंग खरीदनी चाहिए कि साइज छोटा कर देना। छोटा सा आंसर है, एक मिनट, छोटा सा आंसर है, आंसर तो ले लो आप। मेरा पहले सबसे, आपको तो सबसे लास्ट में पूछूंगा, छोटा सा आंसर ले लो, बोलने नहीं दोगे, किसी को बोलने नहीं सर, दोगे। छोटा सा आंसर मेरा ये क्वेश्चन है कि सीए फर्म्स को अपना अगले 15 साल की प्लानिंग क्या करनी चाहिए, किस तरह का स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या क्या काम होगा उनके पास में? सर उनके पास काम होगा, सबको लॉयर बन जाना चाहिए आपकी तरह। सर पहले इतना बड़ा काम कर रहे हो आप खुद ही आंसर दे दो। मैं आज मेरी ड्यूटी सवाल पूछने की है, तो आंसर दे दिया सर, सबको लॉयर बन जाए, संजय जौहर एंड कंपनी। नहीं। So let us go one by one. How CAs should plan his practice? They should shut down, do something else. They should become entrepreneur और आपके पास फंडिंग के लिए आए, या प्रैक्टिस का कौन सा एरिया चलेगा, क्या एडवाइजरी चलेगा, कौन सा एडवाइस करें क्या? अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा। बड़ा करें फर्म को, छोटा करें, अमलगमेंट कर लें, मर्जर कर लें, नेटवर्किंग कर लें, फॉरेन वालों का काम करें, अभी सब गड़बड़ चल रहा है। 15 साल का विजन कोई भी नहीं बना पा रहा, वो आपको हेल्प करनी है विजन बनाने में। एंड दैट्स माय फाइनल क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद दीप्ति एंड देन Amit and then you. So sir, actually I'll repeat the same thing. Because why you are first? Because Australia is much ahead in terms of development. So what CAs are actually doing in that country? Because Sure. what is happening in India now, it has already happened in Australia before 10 years. Pretty much, yes. So what would be the role of CAs in times to come? Sure. And So, sir, to your point, CAs shouldn't be at the tail end of the value chain. It is not just about auditing, finding a gap, and then issuing a report. No, it is, they can very much be involved right from the beginning of the value chain. So when I say beginning of the value chain is, the environment is changing really fast. It is important for the businesses to understand the need for the change and evaluate the case for the change. This is where I think the chartered accountants can actually use their skills, if not in a chartered accountant capacity, but using their analytical minds to actually explain and create that business case and help them evaluate the need for the change and then plan for a roadmap to implement that change. Because even if you look at a balance sheet, we know a small change is likely to impact and affect these many places. So why can't we use that analytical skills to see a small change could potentially impact A, B, and C areas of a business? So I think it is more of using our skills in the front side to help them implement, to build, to plan the change, and then of course be a part of the change. so from backhand, we should come to the front. Absolutely, yes. And I think that is where a lot of chartered accountants in developed countries are now not just limiting to auditing or to accounting, but they're What doing they a are lot generally of doing, what they are generally doing. They're doing a lot of these consulting services. They're providing these independent assurances to large global financial institutions. So irrespective of whether you belong to a big four company or you have an experience as working as a chartered accountant for a big four firm, you could be an independent contractor, an independent chartered accountant who has just started a consulting firm. All they are hiring you is for your skills and experience. As long as you understand the end-to-end value chain and you have the skills of a chartered accountant to do the analysis, they will hire you in the front end of the value chain. Thank you, Deepthi. Yes, over to you. देखिए इसके अंदर ना एक इवोल्यूशन होता है हर चीज़ का। मैं छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूँ। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, मोटर नहीं होती थी, राइट? तो पहले एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसके अंदर जो ह्यूमंस करते थे वो मशीन्स करने लग गई। तब पूछा गया भाई इतने सारे लोग की नौकरी चली गई, इतनी सारी मशीनें लग गई, तो बंदा थोड़ा हायर वैल्यू टाइप का काम करने लग गया। अगर आगे आते हैं, पहले आप लोग भाई का हाथ से करते थे, उसके बाद टैली आया, उसके बाद सैप आया, उसके बाद और एडवांसमेंट होते जा रहे हैं। तब पूछा गया भाई इनका सबका क्या होगा? तो होता क्या है धीरे धीरे कि आप एक नेक्स्ट लेवल का वैल्यू एड का काम ले लेते हैं। वेरी गुड, एंड दैट्स हाउ यू शुड लुक एट इट। तो यहाँ जो पूरी फ्रेटर्निटी हमारे पास बैठी है, दे हैव टू मूव देयर स्किल लेवल टू द नेक्स्ट लेवल टू ऐड वैल्यू देयर नाउ। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि अब सीए का काम का अपग्रेडेशन हो जाएगा। अभी तक जो सीए काम करते हैं उससे बड़े लेवल का दिमाग लगाने वाला वैल्यू एडिशन वाला काम करेंगे। और अभी तक क्यों नहीं करते? उनके पास इजी चॉइस है। जब वो इजी चॉइस नहीं रहेगी, दे आर ऑलरेडी इक्विप्ड,
they have that power, they have that brain, they have that intellect that they can do it. I think, Amit, I endorse what you are saying. Yes. तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सीए का जो रोल है वो चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एडिंग मोर वैल्यू, स्ट्रैटेजिक वैल्यू. मैं बताता हूँ हमारे यहाँ पर हमारे सारे डिसीजन सीएफओ लेते हैं. रियलिटी बता रहा हूँ कि हमारे एओपी में कहाँ पर कितना मार्जिन बनाना है, बहुत स्ट्रैटेजिक इनपुट्स होते हैं. Yes. मैं सीईओ कंपनी का, but he is my sounding board on how to run it. Oh, very and good. that is what happens, right? And then at company in this scale, I rely on his advice to run my company. Oh, very that good. it is, he's that important now. So Yes. this vertical is now run by many thinkers here under him, who are basically feeding. So आपका काम थोड़ा next level का चला गया. Strategy. Very good, very good. So I think you are echoing what Deepti said, that you go to consulting. Better you upgrade the kind of work which you are doing, and that's what CA would be doing in next 15 years. So they should prepare themselves for consulting. And when it comes to any kind of consulting, CA would be first choice because they know the roots of the business, right? Yes, Sanjay, over to you. I think I will echo what Amit just said, कि knowledge का कोई replacement नहीं है sir. Machine के पास कोई knowledge नहीं हो तो हम ही create करते हैं उसके अंदर. So knowledge first. So CA, as I told you last day also, is one of the most important or most enriched subject to get it, because after engineering or doctorate, I always indispensable so I think component of the business. Because Yes. world will be around businesses, world will be around economy, right? We are seeing that, right? So if there's a business, there is economy. CA will find their own way. Right. They may enhance themselves, they might Right. have alternative, but I Right. think our knowledge is so good to understand balance sheet, to understand risk, to understand business models, validation, analytical view on the subject. Even you might be involved in creating machines. Oh, very good. Yes. So you can be part of that machines also, right? Yes. So I don't think that CAs will be largely CA won't be converting into lawyers. I personally feel that. Thank you so much. Thank you. So I feel they will remain CA. Yeah. So I think all of them are saying one thing, and which is very important, and that's you have the basic ingredient to become a business advisor, and you'll all upscale yourself. And right now, maybe whatever kind of work you are doing, if there is a machine part of your work, that machine part of your work would go to machines. And the human part of work, you have to enhance to take it to the next level. And with that, we end this session. And I once again seek your round of applause for all of them, all three of them. Thank you so much. Thank you, sir. We thank our esteemed panelists for sharing such valuable insights on the topic. Before we conclude the conference, we request the core team of SHREYAN to kindly come on the stage for a group photograph with Sanjay Agarwal sir and Amit Jain sir. First and foremost, CA Prakash Sharma sir, conference director, I request you to kindly come on the stage. Now I request the co-directors of the conference, namely CA Anil Kumar sir, CA Lokesh Kasat sir, CA Dr. Abhishek Sharma sir, CA Mohit Gupta sir to kindly come up. Lastly, I request CA Ankur Gupta sir, CA Vijay Kumar Agarwal sir, CA Naveen Sharma sir and CA Vikas Yadav sir to kindly come up. Thank you. Me. Before we conclude, we would like to thank the Committee of Members in Practice and Banking, Financial and Insurance Committee of ICI for organizing this wonderful conference. We also thank the Jaipur branch of ICAI for hosting this conference. We further extend our heartfelt gratitude to all our esteemed panelists, moderators, and everyone present today for having taken out their precious time to be with us. I thank you, CA Prakash Sharma sir, and entire NatCon team for your efforts and making this NatCon a grand success. I once again request everyone to give a big round of applause to all our panelists and the moderator.
4 स्टार जो सिंगल फाउंडर पे लगा हुआ है